then probably we can start the space. 1 second. Hi, Varun. Interesting to see you here. Sushil sir is a little busy, but if you could, come in as a speaker and be here, it'll be nice. So I've just sent you an invite. Okay, thank you for joining. Uh, Varun ji and Saurabh ji, just give us like 10-20 seconds. We want you to speak when more people are here with us. So we already have some people just waiting for some more people, and we can. Okay, hold on. Yes, okay. Rima, can you change the spelling of Bank Nifty to Bank Nifty? I just noticed. I just did that. So, yes, a good thing about spaces is that we can keep changing the topic. We can keep editing the topic. Varun, how are you? How is it going? Hi Rima, I'm fine, thank you. It's a good Wednesday, and yeah, so eagerly waiting to start. Asking the most generic question. How's the weather there? Terribly hot. The God is not kind on us. It's like 42 degrees today, and I'm sure in next week or so it will only rise. Given the trends, June will be pathetic here. I heard by in your place as well. I mean, the temperature is rising, soaring high, right? Oh yeah, it is pretty bad here. I think it's 40 up here as well. So Yes, it's yes, pretty bad. it's 41 in Mumbai. So Pilsa was here a couple days back. So tell me, how was your experience? Like, which is it worse here, or is it? I think Mumbai. Mumbai is it is terribly hot. Terribly hot. Yes, terribly hot year round, like all year round. I don't think you guys even need winter clothes. So okay, Lata ji is here. Sushil sir, view is very very nice. किस चीज का view of the what is that slum called? No, Mumbai, in some places the views are actually nice. You can see the hills from up there. So yeah, in some places it is actually very nice. Oh, Dharavi. No, no, I am saying Sushil sir view is very nice on market. Oh, okay. Guess we were talking on completely different parallels, but okay. So Lata ji is here already. So Sushil sir, I think it is okay to start. I know you're a little caught up today, but I hope we'll get to hear from you soon as you're done with the thing. So In and out chalega. आप लोग discuss करो. Sometimes I should also listen. No, I will pitch in. Let me get a sense of what everybody else is also feeling. okay, sir, and co-host भी भेजा है. So if you're free, do accept that. Okay. वो मैं गाड़ी में बैठने के बाद accept करूंगा. अभी it will get broken. So carry on. I'm there with you. Okay, perfect. So Saurav ji, if you're around, would you like to start? And also I'm adding almost everybody, so we can, I mean, like, towards the end we kind of, we cannot take all the people sometimes. So today please send in a request quicker so that we can take you faster, because I feel bad as well when I cannot, take so many people who have been wanting to speak. So yeah, do that, send us a request, don't wait for the end. And yes, okay, Saurav ji, are you around? If not, then we'll go to Prince Patel ji, if you're around, would you like to go ahead? Tell us your view on Nifty and Bank Nifty in general. Okay, so I guess he's not around as well. Sagar Raj or Ankit, anybody if they're around.
Doesn't seem so. Okay, I'm adding in some people. Hi, Dima. Hi Hi, Rima, Lata. you should actually inform people about what is Nifty and Bank Nifty and what is the difference. Difference between Bank Nifty and Oh Nifty. God. Yes. Oh Uh, God. but I think you can get it through Google, right? uh, is that difficult to find? Lataji, we don't do this to Varun here. Varun is a dear friend. Okay, I thought he was joking. No, no, we cannot. No, since nobody was speaking, so I opened my Okay, mic. I was wondering what kind of questions people ask these days. No, 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 no. It was just No, uh, I don't have. I'm more of a fundamental investor, so I don't really have a Bank Nifty and Nifty thing. But by and large, I don't feel there are any really dark clouds hovering above our country. And my feeling is that okay, one day up, one day down is more or less going to be a little flattish kind of scenario. My feeling, and more towards, I would think, because I am an optimist, more towards the higher side. This is my feeling, but of course, it's totally ungrounded in anything except my temperament, which is optimistic. But मम्मी बाहर जोकर short है term, जोकी है देखा ये जोकर sorry, जो कोरे ने कहा ये प्रियम दिए I थी have जोकी है turned down if you देख ले guys. बा चेक कर ले बा okay, all right. You cannot talk when Uh, you're muted. I'm being very generous today. I'm allowing everyone here. I mean, you know, giving everyone a space to talk, but you cannot interrupt in between. So if you want to do that, just go down on your own. Don't do this here. Dadaji, please. No, I just this really. I mean, I'm waiting for everyone to give their opinion because I don't have a really short-term view. More like a beyond 1 month view, which is on the upside. And by and large, even Bank Nifty should do well. Of course, this is a result season, so a lot of factors do play their role. But I think, as far as our country is concerned and our economy is concerned, I don't think we really have too much to be worried about. This is my view. That's it. Thanks, Rima. Lataji, I mean, if I can add, so Nifty was going up continuously for, I guess, 9 to 10 days. So, I mean, 2 or 3 days of slide is not a cause of worry. And India is a growing economy, as you mentioned. I mean, we are growing at about 6.5, 6.9% or 7%. So, which is a very, given the scenarios of global economy having a trouble. So this is a pretty positive sign, and in a developing economy, you will only see upside in coming days. It's just a matter of time. This is what I feel also, because the Ukraine war doesn't seem to be playing its part for us, and I mean, the opposition finding things like somebody saying that what's happened in UP is like gloom and doom kind of thing. I mean, they tried to blow up everything, that Satyapal, what he said. I mean, all these little efforts are being made to try and prick the balloon, which they think is a balloon, is India. But I don't think that these are going to work at all because people are seeing through all these things and the market is going ahead irrespective and looking only at the top line and bottom line figures of all these results. I mean, the tech stocks did take a beating because the results weren't good, nor was their guidance all that great, which makes sense, which have nothing to do with the political scenario at all. And so I think India is at this point cruising. This is my feeling. And of course, it is at little bit of that plateau at this point. It's in the range bound kind of thing. But if it has to take a bias, my feeling is it would go towards the upside because there is no real cause for concern. Yes, one cause for concern can come up, which is the Karnataka elections, which can come up, which will take some time. It'll be sometime in May. As of now, I don't feel that there's anything really to be concerned about. So I would, if I was an investor, which I am, I stay put. I'm fully invested. I feel
quite positive about the thing, and I don't have a short-term view. And of Even course, the bank. prices of crude have come down, and That's right. Yes, which will have people will have more savings. So yes, probably more savings will lead to more investments, and this. absolutely. And it helps the rupee also. So that's also a good thing. So, and of course, the 18 countries that are going to be dealing with us in rupee, a very helpful factor in the long run. So it's looking quite healthy as far as I can see. And we should just sit it out and sit with good stocks. And, if you want to take very good bets, then a lot of stocks which took their beating after the Hindenburg report, those stocks can be looked at because they have taken a beating for no rhyme or reason. So they can be looked at and maybe, start investing in something like that, which I already did at that point because I really felt it was a fake thing. But even now, they are quite well priced. A lot of stocks that were beaten at that time. And they have intrinsic value, which is something that we need to look at. I mean, for example, a kind of stock like Ambuja Cements, these are very, very solid companies. So there's no harm in being a little bit invested in such companies. So, guys, just one thing, if you can, retweet the space so that we have more people joining in and we have a more elaborate discussion. So, just humble request, please retweet the space so that we have more people in. Okay, we have Karan here with us also. Varun, I hope you've googled the difference by now. But anyway, so Oh, absolutely, absolutely. Thank you so much. okay. So if anybody would like to go ahead, please, speak now because if you're sending a request, I expect that, you want to say something or ask something or, add in your thoughts. But after coming up, you're not speaking. So, okay, anyway, I think we can listen to Karan right now. Hi, Karan, how are you doing? What are your views on Bank Nifty? Hi Rima, doing well, doing well. Hope you all are well. Hi Lata ma'am, hi Sushil sir. So, like rightly mentioned, basically, uh, I just feel that talking about the IT result season that's been on, Infi TCS में major काम तो हो चुका है, and that 10-11% down move on Monday was neck breaker for people who were long on it. Like I'm not talking about the cash wala retail segment. I'm talking about the people who were generally. There's some people obviously they're long and shorts, right, all the time. So having said that, I'm just saying the kind of recovery it gave till the time that low doesn't break on the downside in any like let's talk about Infi, like the elephant in the room, the and TCS also. So once the lows of that doesn't break, till the time it doesn't break, I would just suggest that stay put, don't do anything, and yeah, I mean, don't preempt things. That's all I want to say there. And yeah, Nifty Bank Nifty, it's a tricky game right now. It's a fight between the buyers and the sellers, the call writers and the put writers, and it's been on since a while now. It's been in the range of 1,000 points. और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव अप मूव आया था 9 दिन अप मूव आया था अभी और 9 दिन डाउन मूव भी आया था ऊपर 18 100 150 से 200 250 लेवल से नीचे डाउन मूव 9 दिन आया था अब यहाँ पे 8 9 दिन अप मूव आया था अब 3 दिन की डाउन साइड आई है निफ्टी में और वो 3 दिन की डाउन साइड अब कैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं दिस इज going to be very crucial. Sushil sir will add to it, I'm sure, but this is going to be very crucial to observe that what it does here because it's a very strong fight here. We need to genuinely observe this and act accordingly. And bank nifty is doing something else. Bank nifty is showing strength in some stocks, showing weakness in the others, so it's a bit confusing. I'll talk about it when once it crosses 41 700 650 levels on the downside, and if it crosses 42 600 levels on the upside, 42 800 levels on the upside, then I'll be more clear about it. So nifty, I'm very clear about the levels, and of course we keep on talking about the levels, so let's not drag this level thingy. तो ये है बाकी yeah, the mid cap and small caps, I would love to know Sushil sir's view on that. इसमें क्या है whenever he speaks.
So yeah, that's about it, Rima, from my side, and I'll just continue with the conversation post that, post the views of other people. Yes, perfect. So, Sushil sir, if you're done right now, I think we all would love to, hear from you. But if you're not done, I have very limited intellect on making an opinion of so many things, and it has taken a long training to not abuse intellect while one still has it. तो इंडिया शाइनिंग स्टोरी और देश का कल्याण हो जाएगा और वो सब सारी बातें हैं भाई, वो रोज है, सूरज रोज निकलता है, रोज सूरज रोज उगता है, रोज ढलता है। पर इसका मतलब ये थोड़े कि आज दिन भर में थप्पड़ नहीं पड़ सकता या इस दिन भर में लॉटरी नहीं खुल सकती। तो सूरज अपनी जगह पे वो चमक रहा है, चमकने दो भारत के सूरज को। माई ओन कॉल इज निफ्टी हैज ऑलरेडी कंफर्म्ड ए स्लाइड। ये पहले 3 दिन का जो डाउन मूव है, इस रैली का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को ठोक दो। कहां तक नीचे चली जाएगी जोड़ नहीं सकोगे। एंड इफ बैंक निफ्टी टुमारो क्लोजेस बिलो 42,190, आप मोटी मोटी बात पकड़ लो 42,180, तो बैंक निफ्टी को भी ठोक दो। क्यों, कैसे, क्या क्या होगा? अरे भाई इंडिया शाइनिंग है, वर्ल्ड में कुछ तमाशा हो जाएगा, ताइवान का कहीं और कुछ हो जाएगा। बुद्धि के बारे में मैं 2 ही चीज कहना चाहता हूँ, बुद्धि कितनी भी लगा लो थोड़ी है। दिस वर्ल्ड हैज सो मेनी थिंग्स दैट वी विल ऑलवेज हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन, और बुद्धि जितनी थोड़ी लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा काम करेगी। बुद्धि के साथ 2 प्रॉब्लम्स है, बुद्धि जितनी भी लगा लो थोड़ी पड़ती है, और जो बुद्धि को थोड़ी सी लगाएगा उसकी बुद्धि ठीक से काम करेगी। तो इसलिए ये फंडा के अंदर मेंटल होने से वो फंडामेंटल नहीं बन जाता है। यू हैव टू चूज द राइट फंडामेंटल्स। समबडी वाज टॉकिंग अबाउट क्रूड का दाम कम हो जाएगा तो लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसे जेब में बढ़ जाएंगे। अरे मेरे भाई, ये भी तो पॉसिबल है ना, खर्चा करने की ताकत कम हो रही है इसीलिए क्रूड का दाम कम हो रहा है। तो बाल की खाल मत नोचो, ये एनालिसिस मत करो कि ये चीनिया बादाम मूंगफली का तेल है या ये बादाम का तेल है। अखाड़े में आयो, पहलवानी करने, तेल लगवाना है कुश्ती लड़ने के पहले, तो बस ये देखो, तेल की धार को देखो, तेल को मत देखो कि ये बादाम का तेल है या ये मूंगफली का तेल है। लगवा लो, बिना तेल लगवाए अखाड़े में उतरोगे तो पिट जाओगे। तो तेल की धार को देखो, ये मत एनालाइज करो कि ये बादाम का तेल है। लॉन्ग रन में फैंटास्टिक, नो डाउट। लॉन्ग रन में मैंने भी 50,000 बैंक निफ्टी देखनी है, उसके पहले 32,000 हो गई तो क्या करेंगे? हो सकता है कल अगर ये लोअर क्लोज आ जाएगा तो अपन तो कल ही 36,000 का व्यू ले लेंगे। अब रॉन्ग होंगे राइट होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। भाई क्या कर रहा है तू, ये रुक जा, कैसी रोटियां बना रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ। आई थिंक if the high of Nifty is not taken out, I won't be surprised if it keeps on sliding down to retest that 15,000 or even goes below that. How it can happen when so many stocks are giving a buy signal, that's the interesting part. बाजार कभी भी छद्म करना नहीं छोड़ेगा। तो कम से कम 200-250 ऐसी क्वालिटी स्टॉक्स नजर आ रहे हैं जिनकी चार्ट ऑलरेडी 12,000 14,000 का भाव बना चुकी है और उन्होंने 22,000 की चाल शुरू कर दी है। और हर एक सेक्टर का आप लार्जेस्ट स्टॉक ले लो, बजाज ऑटो बढ़ गया, हीरो मोटो को अब बढ़ना शुरू हुआ है और मारुति लुढ़कने को तैयार है। तो आप आ जाओ उधर, सारे सेक्टर्स में आप चले जाओ। विप्रो टीसीएस हेजिटेंट है, इन्फोसिस ने राम नाम सत्य कर लिया। तो हर एक सेक्टर से आप एक लार्जेस्ट स्टॉक को ले लो। बैंक्स के अंदर आईसीआईसीआई बैंक एकदम डूबने की तैयारी में है। वो चार्ट जब 960 से 800 रुपये गया था तो सबने त्राईमाम बचा दी थी। उस 160 रुपए की मूव का सेकेंड लेग स्टार्ट हो रहा है। एचडीएफसी बैंक का काम खत्म, खाली एसबीआई, कोटक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक में 2-3 दिन की 4 दिन की रंगबाजी बची है। जब ये भी लुढ़कने लग जाएंगे तो बैंक निफ्टी विल फॉल फास्टर देन निफ्टी। लगातार पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है। बैंक निफ्टी इठलाती है शुरू में बैंक निफ्टी ड्रामा करती है कि वो हनुमान जी है, और फिर जब ट्रेंड डाउन का स्टार्ट हो जाता है, पूरी तरह से पकड़ लेता है ट्रेंड, जो सारे बैंक निफ्टी के बुल्स जो है ना, हनुमान चालीसा जपना शुरू कर देते हैं। इस बार भी वही हो रहा है लग रहा है। सो आई विल स्पीक विद इफ एंड बट एज ए ट्रेडर, टेक दिस एनालिसिस एज वैलिड
only if Bank Nifty tomorrow closes below तकरीबन 42,150, 42,180 पकड़ लो आप, और फिर कारण जो है वो आगे मिलते रहेंगे। संसार में इतने सारे कारण हैं, the one that became the valid reason will be only known once the move happens. फिर कोई आके चीखेगा तुम्हें कैसे मालूम कोरोना होने वाला था, तुम्हें तो पता ही नहीं था कोरोना होने वाला था, फिर भी तुमने मंदी कैसे बोल ली, तुम्हारा तुक्का लग गया। तो भाई जरूरत से ज्यादा जिसको पता रहेगा ना, जरूरत से ज्यादा जो दिमाग लगाएगा वो अपने दिमाग के साथ ही उलझा रह जाएगा, और जो तेल की धार को देखेगा वो तेल के साथ बहता चला जाएगा। सो आई थिंक दिस वाज अ घटोत्कच मूव। द डिक्लाइन दैट बिगेन फ्रॉम 19,000 निफ्टी फाउंड एन इंटरिम सपोर्ट एट 16,800, और उसके बाद एक घटोत्कच वाला उछाल आया टेम्पररी, एंड नाउ आई थिंक पार्ट 2 ऑफ दिस catharsis will begin, and if it makes a low lower than we have seen in the past at 15,000, अगर वो भी टूट जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा। उसके बाद बेशरम तेजी वापस आएगी, 21-22 हजार की निफ्टी मुझे वापस लगती है। Sir, are you still talking? Because I cannot hear you. No, he's not talking anymore. Yeah. So, I have unmute था पर I आवाज have नहीं आ रही थी. question to So, Sushil okay, sir. I hope he'll keep coming back सुशील in. सर I have question to Sushil Who sir. is this? Okay, Nitesh ji. क्या Yes, Sushil sir, okay. सर I आपने just want to ask you. कैन आई स्पीक हाँ, you're talking already. Go ahead. बोलिए. यस सुशील सर आपने जो बात बोली ना अभी वो एकदम रियलिटी है। अगर कोई भी आदमी इस चीज को देखेगा ना तो वो यही सोचेगा कि डेफिनेटली इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है और यूएस मार्केट में उनकी बैंड बजी हुई है और हर जगह सिचुएशन ऐसी है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू cope up with the inflation and they're trying to protect their economy। पर प्रॉब्लम इंडिया के साथ क्या हो रही है सर कि यहाँ पे इकोनॉमी को भी पॉलिटिसाइज कर दिया है और डीआईआई इंडियन इंस्टीट्यूशंस वो तो ठीक है गवर्नमेंट के साथ है ही, बट व्हाट एग्जैक्टली आई फील कि एफआईआईज दे आल्सो सपोर्टिंग मोदीज। सो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है because I have the friends who are working in different you know some very big institutions। they said to me ki uh, the things are it's not like ki 1 plus 1 is equal to 2, but the thing is ki मोदी जी जब तक हैं, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट अगर क्रैश हो जाएगा then what is Nitesh, just to we are not making it a really political space, and I mean, it's getting not very like that jealous. because what exactly sir said to us Sunil sir ki uh, we are seeing the datas and based on the datas we are talking about ki nifty will be on 15,000 और 16,000। बट सर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। मुझे लग रहा है कि आई विल सी द निफ्टी एट द 19,000 वेरी सून। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज हर जगह से सपोर्ट आ रहा है। FIIs are also maybe they are pressurized but they will support India। क्रैश इंडिया के मार्केट में नहीं होगा, और अगर होगा तो वी आर हियर, वी विल डिस्कस ऑन दैट। So was that a question to Sushil sir, or that was your statement? What was that exactly? बेसिकली द सर was exactly very right कि based on the data, based on the figures, fact and figures, it look likes कि ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं क्योंकि जो हमें दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है ना।
प्रॉब्लम तो यही है ना सबसे बड़ी, अगर हमें सब कुछ दिख रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग होगा तो देन एवरीबडी विल बी राइड ऑन द टाइड, बट द प्रॉब्लम इज कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की है, लोगों ने ऐसा बोला है, आई हैव द यू नो आई हैव द कॉन्टेक्ट्स, तो कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ पॉलिटिसाइज्ड हो गया है और मार्केट को नहीं क्रैश करने देंगे, एटलीस्ट इंडिया के मार्केट को क्रैश नहीं हो पाएगा। क्रैश की बात करी किसने? किसी ने भी ये वर्ड ही यूज नहीं सर किया अगर बोलो। निफ्टी अगर 1000 पॉइंट डाउन जाती है, दैट विल बी क्रैश एट दिस नो, दैट्स नॉट अ क्रैश, दैट्स नॉट अ क्रैश। सर 18,200 से 16,800 गई थी, दैट्स नॉट अ कोविड क्रैश, दैट्स नॉट अ, दैट्स अ वेरी गुड कोविड करेक्शन, दैट्स नॉट अ क्रैश। अब देखो, क्रैश और करेक्शन वो हमारी सबकी डेफिनेशन होती है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसको हम अलग अलग डेफिनेशन दे देते हैं, बट इंडियन मार्केट इज वेरी सर स्टेबल। 10% इज नॉट अ क्रैश, 10% ऑफ द मार्केट परसेंटेज इज नॉट अ क्रैश, प्लीज अंडरस्टैंड। डेफिनेशन की बात नहीं है, मैं हवा में नहीं बोल रहा। नो अबाउट इट सर, आई नो अबाउट इट, सर आई नो अबाउट इट, प्लीज, I know or 15% or 20. Okay, we need to move on from this. Okay, okay. So our आई definition थिंक वो can be different, 10% but we कितनी cannot देर change में it. आता है Himanshu, उससे please don't I have a interrupt. question with I'd Sushil request, sir. I'd expect बट everybody not to यहाँ पे एक्चुअली है interrupt ना, me प्रॉब्लम in any of the प्रॉब्लम ये हो debate. रही है कि I have a question with the Sushil sir. Sushil डेटा sir. Niteshji, we have enough time to keep your points, to put forward your points. We might be able to take it again, but we need to let other people talk as well, and this is going completely डेफिनेटली डेफिनेटली, irrelevant. So प्लीज प्लीज गो अहेड, yes, okay. So आई विल म्यूट who माय do we सेल्फ। have next? Sushil are you trying to say something, because we are not getting you. You're showing on unmute. So if there is any issue, please DM me or try to एक्चुअली come back. एक्चुअली मैम द पॉइंट From इज कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर सीइंग इज ऑन द डेटा, व्हाट वी एग्जैक्टली सीइंग ऑन द इन्फ्लेशन डेटा, but the things are very beyond on that, what exactly we cannot see. Reema, can you just handle this? It's just No, I am. I was just trying to see, why I'm not being able to get Sushil sir on here. So Nitesh, I think we are Yeah, done on definitely, that. You ma'am. have, Definitely. You talk to. I have repeated that for like 5 times already. We cannot keep doing this. So I'm okay, just going who do to we mute have myself. next? There are lots of No, experts. no, yes, yes. We said that already. But you have not. No. That's it. That's it. We're not. There are We're not lots of people going who on. put Okay. their opinion. Okay, so some I new have people have joined in with us. If anybody would like to I have a question to share the their Sushil sir. views, I have a question to the Sushil Ajinkya, sir. Himanshu, if any of you would like to Hello. put forward your views, please go ahead. I'm adding in some new people as well. Hello. Um, okay, so somebody was speaking in between. Now you have the time. I think now you can speak, apart Hello. from interrupting in between. But Hello. somebody okay, is trying to speak. I mean, Hello. no, I cannot hear anybody. Hold on 1 second. there is someone who's See, continuously saying okay, hold on. Sandeep ji, good to see you here. If you are free, please to come up. We would love to hear from you. I know Hello. I haven't heard you much in spaces, but if you're free and if you think you can spare a few Hello. minutes, please to come up. I Okay. think Ankit, you need to be. I think Reema cannot hear you. You need to just come I, back I again. have a Yes. question with the Yes. You, Sushil you need to sir. come back. I think she cannot hear you. She's the host. She cannot hear you only. So you need I to have come a back. question. I have a question with the Sushil sir. So okay. Um Karthik, okay, Karthik, go ahead. And after that Hello. we'll Uh, Hello. so, uh, so Sushil sir, last month when we attended your spaces, you found quite a few stocks. I wouldn't name stocks, but you said there are quite a few stocks at an attractive valuation available after the correction. These are not necessarily Nifty or Bank Nifty stocks. So we understand there might be a slide in Nifty, Bank Nifty, but do you still see some attractiveness in selective counters which have already fallen a lot? Or do you think it's good to stay out from those as well?
Karthik, I think Sushilji is away for just a bit. I hope he reconnects or he joins back soon. So yeah, please do wait for that. Yes. I have Um, one question with the so Sushil sir. anybody else who would like to go right now, and then I'll come to Yes, Aditya. yes, Rima, yes. Yes, yes. what you need to do, Rima, is just tell people to hold on to the Sushil Kedia questions because he's not online. So they can just express their views first, and then when he comes online, then they can ask him. Exactly. So that's a pretty, valid point. Please hold off on your questions or hold on to your questions for Sushil sir. He'll be here in just a bit. I hope he'll be able to answer all your questions then. In the meanwhile, we have Aditya. Hi, Aditya. How is it going? Hey Rima, I'm good. I'm good. How are you doing? Yeah, all good. So, yes, what are your views on Bank Nifty at the moment? What is your analysis in brief? So I think I haven't seen Aditya, like sorry, I would love to know the mid cap, small cap story also here. Huh? I've been trying to talk to people about it. So yeah. sure, sure. So just give me like 5-10 minutes, Rima, and then maybe I'll speak. Yeah, just to get a general sense of the Yes, discussion, and I'll yes, speak in yes, five ten yes. minutes. I just saw your message now. Yeah, yeah, So, yeah. All right. okay. Yeah, So, and who definitely, Karan, I will talk about the small cap, mid cap also. But yeah, in some time. Yeah. All right. Perfect. Perfect. Thanks. So, Rupesh ji or Sripathi ji, if you would like to go ahead now, you can. Sagar Raj, if you're not speaking, I'll just add in some more people who actually want to talk. Okay. So, since that is not happening, I'll send you guys down in a bit. So, okay, cool. Uh, Sandeep Parekh to speak, or has he gone off? Lataji, I did not catch what you said. I said maybe we can ask Sandeep Parekh to speak. I did. I did invite him, but I don't know if he's not available or he does not want to. So Sandeep ji, again, I'm requesting you if you're free, if you can. Hello, Rima. Yes, 1 second. So, can you please mute yourself when I'm speaking? Okay, so Sandeep ji, if you're free, I think a lot of people here want to listen from you. So if you're free, if you think you can come up for a bit, please to accept the request and join with us. Same goes for Monica ji as well. So if you're free, if you think you can come up and share your thoughts, please do so. We'd love to hear from you. So okay, Rupesh, you wanted to talk. Go ahead, and in between, I'll just try to see if we can connect back with Sushil sir. So Rupesh ji, go ahead. रीमा नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट इतना बोल रहा हूँ कि आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बात कर सकते हैं क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे, मैं जैसे देख रहा हूँ उस पे ट्विटर पे मैसेज आ रहे हैं कि हिंदी में बात कर सकते हैं क्या या कुछ ऐसा। तो अगर आप मिक्स बात कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब इफ यू कैन। That's a valid suggestion. Try to do that. I'm, it just comes in a flow. So, अगर होता है तो definitely I'll do that or I'll request our speakers to do that. So, we'll see how it goes. So, okay, Karan, can you be here for like 5 minutes? Can you take over for 5 minutes? Yeah, sure, Rima. Perfect, perfect. So, Lata ma'am, you there? Yeah, I'm here. Perfect. Okay. So I was just asking, I just wanted to ask you a few things since you know, into more of investing and all. Yeah. Then I want So to ask one question. one second, Ankit. One second. Give me a moment, please. Let me just complete. I'll take you next. Yeah. So, Lata ma'am, what do you think? Like, you're into like, if you let's for the speakers, if you're into, if you want to add some fresh investments here, yeah. So, what kind of capital you are thinking to deploy at this moment in the markets? इधर मतलब क्या आप सोच रहे हो? मतलब do you have something in mind or you're just staying put? Like, because I missed the initial conversation, तो मैं इसलिए फिर से पूछ रहा हूँ और I have the follow up.
No, I did. I think you missed that bit. I did say that I'm. I missed that bit. Yeah, okay. I said I'm almost fully invested, so there's no, I don't have any doubts. My only question is whether, there's a certain amount of capital I have, whether I should be putting it into some safer thing rather than the market to diversify, nothing else. But हाँ, most, अच्छा, 95%, I would say I'm fully invested. So that is my right. my conviction and my Hmm. belief that see, as a trader, the outlook is quite different than when one is a Yes, investor. absolutely. So I do trade, but I would say my proportion of trading would be like investing versus trading would be 80-20. So the Mhm. trading part is only just for fun. It's really, it's not something that I take that seriously. But my investments I take very seriously. So, I mean, Yeah. where my money is parked and where I'm sure to get certain dividends and where I'm sure that the company's management is great, they have a consistent track record, and Mm-hmm. their quarterly statements, all that, Mm-hmm. conference calls and all that, whatever. So, when you get all that info, you kind of get a very secure feeling and Hmm. you are able to make the kind of, limited profits that you are looking at. You're not looking at multi-baggers, when No, you're correct. But then really. there are chunks of it, or you do it one time or two times. There are No, multiple chunks of sorry. it because I do it I chunk didn't in I the didn't chunk basis. understand. Like I didn't understand what you said. as in once you when you think of investing a certain amount, right, in the markets, Yeah, right? yeah, So yeah, yeah. I do like one fourth, one fourth, one fourth, one fourth. There are four chunks that I personally, work at. Oh, yeah. Yeah. Yeah, That's that's what I was coming to. Matlab, hmm. Go ahead, ma'am. Bolo. interesting. It's quite interesting. See, it depends on the conviction, but by and large, I think I've become a little more sanguine, rather a little more, what would you say, wise. I think, I don't know, one is never wise in the market, but a little more wise than before, that I don't put the whole chunk at one time, and then you say, because there are so many ups and downs in the markets. So then the old philosophy of, increasing your holding if the stock is doing well, and decreasing your holding if the stock is doing badly. So this, of course, depends on the results and the outlook of the management and all the changes that are happening. You have to modify your approach according to that. So I'm sorry, I'm speaking a lot in English. Somebody requested Hindi, so I'm going to try and speak in Hindi also. Uh, जैसे जैसे स्थिति बदलती है, तो वन हैज टू, तो हमें वो सब चेंज करना होता है. जैसे आप when you're sailing, you have to change the sails, right? You have to set your sails according to the wind. So you have to look at the wind also. You cannot just say, okay, I have bought this stock. Now I'm going to be staying put here for 5 years and I'm not going to be bothered with anything. That just doesn't work. So, and दूसरी बात मुझे जो ये लगती है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग सोचते हैं, अभी मैं आजकल ये देखती हूँ कि लॉन्ग टर्म क्या होता है. द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म भी चेंज हो गई है. तो लॉन्ग टर्म अर्लियर ऐसे था कि एचडीएफसी बैंक में ले लो, तो मतलब वो लॉन्ग टर्म 5 साल के बाद भी और 10 साल के बाद भी अपने बच्चों को छोड़ दोगे, नो प्रॉब्लम. लेकिन अब वक्त इतना बदल गया, इतना फास्ट, इतना तेजी से सब चेंज हो रहा है, इतने पैराडाइम्स शिफ्ट हो रहे हैं, इतनी Absolutely, मैम. बहुत एक साल डेढ़ साल में हो जाती है कहानी. जो हाँ, लॉन्ग ये आजकल लॉन्ग टर्म वही सोचती हूँ कि लॉन्ग टर्म, जब मैं सोचती हूँ कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म सोचती हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म की जो पीरियड है वो शॉर्ट होती जा रही है. तो ये एक दूसरी चीज हो रही है, देयर इज सो मच change happening. The paradigms are shifting so much, that there's so much disruption. I don't know how to use the word disruption in Hindi. कुछ पता नहीं है मुझे. रीमा perhaps knows the word disruption in Hindi. इतना सब चेंज हो रहा है. एक चीज जो बहुत ही पॉपुलर थी वो अभी नहीं है. लाइक अभी मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो आई एम जस्ट टेकिंग एन ऑर्डिनरी थिंग. यहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी होती थी जिसपे बहुत गाने बने हैं. हाँ, ओपिनियर ने बहुत गाने बनाए उस पे, घोड़ा गाड़ी पे. आई रोट अ बुक ऑन ओपिनियर ऑल्सो. तो वो घोड़ा गाड़ी जो थी, अभी बॉम्बे में घोड़ा गाड़ी नहीं है, वो इलेक्ट्रिक चलती है विदाउट द घोड़ा. यू नो तो ये एक एक चीज में आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक ये है. तो अब वैसे आप गाड़ी निकालते थे घर से और
ड्राइविंग के लिए निकलते थे, अब जहां भी आपको जाना है आपको पार्किंग का इशू होता है, तो फिर उबर यूज करते हो, तो उबर का जो बिजनेस है वो चेंज हो रहा है, सो ऑल दीज changes are happening which are taking people completely by surprise. जैसे अभी लास्ट ईयर ट्विटर was taken over by Elon Musk. I don't know whether I'm audible. Am I audible? Yeah, you're audible. Okay, so I'm just saying that Twitter was taken over by Elon Musk. Donald Trump lost the election practically because of the social media platforms. Okay. And now you have Twitter, and he says in an interview today to Tucker Carlson that, Twitter is going to play a big role in the elections, not only in America, but all over the world. So, again, another paradigm shift that Twitter is now owned by somebody who doesn't think in the old way, okay, Democrats only must come to power, the liberal old. So, what I'm trying to say is changes are infinite in the market. So, for anybody to be very cocksure about something today is impossible. It's impossible. This is my feeling. So, Hmm. looking at India from the long term point of view with quote unquote long term, a year and a half, I'm quite happy. The situation is quite comfortable in India. And so I'm fully invested. I would say almost fully invested. So that I No, don't that's buy good. things, I don't buy things in a big chunk. I slowly keep on increasing my holding. That has been my Hmm. philosophy. Yeah. No, Thanks. that's the right way to go about it also. Great. Makes sense, ma'am. Thank you. Thank you for this. So, Sachin, if you're there, Sachin sir, if you're there, Hello, sir. Sachin, okay, Sachin Saluja sir will take it. Sachin, मैं yeah, बात कर go ahead. सकता हूँ? बोलिए सर बोलिए. हाँ, सर ने ये जो बताया है 25% बैंक निफ्टी का करेक्शन आ सकता है, ये तो ठीक है। ये वेव के हिसाब से या इलाइट वेव या न्यू वेव के हिसाब से ये ठीक है बात, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि इस करेक्शन में सर ने पहले बोला था कि पीएसयू बैंक में नहीं बेचूंगा, तो क्या ये सर करेक्शन किसकी बात कर रहे हो सर? किसकी बात कर रहे हो? सुशील सर ने बोला था ना कि सर पीएसयू सुशील बैंक सर है नहीं यहाँ पे सर, वो जब आएंगे तो उनसे बोल देना. आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ. नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन फॉरवर्ड हो सकता है क्या बाद में? रीमा इज ही देयर? अदरवाइज वील टेक सम अदर. आपके पास कुछ और है तो आई डोंट थिंक ही इज हियर. No, like we said, if you want to ask any question to him, just hold on to that a bit. He got caught up in something. He'll be back with us soon. So, okay, who else do we have here? And if anybody else want to join in, like other times you guys come in late and request late, and I am unable to take everybody. So, today I think we have some time, although I don't want to drag it till way too late. So, if anybody wants to talk who has not, who could not talk before in our previous spaces, so please send in a request. We'll have you up for sure. So, Karan, I think we can take other people in the meanwhile. So, Sure. I think Sachin Saluja is here with us. So I think if he's there, Sachin Saluja ji. हाँ okay. सर। Hi, Sir, Karan. finally, sorry, last space was sick, yeah. No I don't know issues. what's wrong with Twitter. Yeah, Yeah. go ahead. Yeah. Hi, Karan. Hi, Rima. Hope you all are doing well. Hi, all the speakers. So, I also was looking at the chart today, weekly chart. So, the I'm not able to hear am I you. audible now? Yeah, now it's fine. Yeah. So, the previous week low on the Nifty is 17,597. So, if we, make a candle close. 570 sir, 570. No, 570 I guess is the Monday's low, but previous week low is Acha, previous yes, previous weekend. week low Okay, is yeah. 597. So if we are able to close below that on any given day, so it will be like a bearish engulfing on the weekly chart, right? So which will like this breakout which happened on 17,800, which will make it false breakout, right?
And once that is confirmed on the weekly chart, so we can look at the lower levels, which is like 17,200, because the gap almost there on the daily chart, because the gap which were on the downside move around 7,550 and 7,770, those all are filled. So I believe that this gap should also be filled. Hmm. Okay. Any stock specific view that you have, or index specific, something that you need to add there? The bank nifty range was quite narrow today, so 42,000 to 42,200. This is like very narrow range, and if it breaks on the either side of this range, so we can easily get 200 points move. Stocks I don't track, I only trade nifty, bank nifty. So yeah. Thank you. Thank you. Thank Yeah, you, Rima. Sachinji. Thank you for joining with us today. I think I'm coming across you for the first time. So very interesting points there. And okay, we have Aditya. Hi, Aditya. Hey, Rima. Hey. Hi. Um, Hi. Yes. hey. So on Nifty, I think 17 800 was sort of a resistance, right? And it has turned back from there. So I'm not. Matlab, I think it could be a slide. I think the trend may have turned, but yeah, in the once this is done, it might be the final slide, right? Which is sort of the topic in the subject of the space as well. So it could be the final slide after which it could start to go up. So that is my view on Nifty. But again, I don't trade Nifty. I'm mostly into micro caps and small caps. So my view there is very different. I think in case of micro caps, micro cap index has given a breakout, which is a very good thing. A lot of people who have micro cap portfolios, their portfolios are at all time highs, and my portfolio is very close to all time high as well. So I think micro cap space is doing phenomenally well. It has given a breakout, and with the result season, right, I expect some companies to post very good numbers. And in case if they actually end up doing that, the microcap index would skyrocket further as well. So I think that's my thought on the microcap index, which is doing fairly well for the past 1 month. And I think Lata ji was mentioning a point on disruption, right? So completely agree with her point. I think we are in the age of disruption, and no company can actually claim that they are very safe from disruption. What Geo did to the telecommunication space 5 6 years back, I think that was disruption in the telecommunication space. No bank would be safe right now because even in Europe, banks are getting disrupted by neo banks. So no banking is safe. I think technology is changing, and with tech, right? Tech can actually disrupt any business. I remember Piyush when I was in Lenskart, right? Piyush was telling me how he disrupted the Tata Kai business. So disruptions are around the corner, and I think a lot of new age businesses Aditya, can emerge which sorry can to disrupt. interrupt. Which business do you talk about? Tata. टाटा का जो आई वेयर था आई केयर मतलब लेंस कार्ड जब खड़ा हुआ पीयूष ने जब खड़ा किया था Okay. so he was telling me कि how he disrupted the टाटा वाला जो I don't remember what the name of Tata that had business any was. other business model? जो टाटा की चश्मे नहीं होते क्या उसको क्या बोलते हैं टाटा का Titan. जो होता Okay, टाइटन Titan टाइटन आई Plus. प्लस Yes, they had a. They still have it now, no? Or is it like obsolete? it is there but it is it is much smaller than Lenskart. So Lenskart is far bigger than Tata right now. So he was telling me how he created a very good pricing strategy. Lenskart's strength is the pricing strategy that they have. So, So but it's Lenskart big became now. It's big now, right? It's big now. Yeah. yeah, exactly. It's much bigger than Hmm. Titan I Plus. Much bigger now. Yeah. Exactly. Because when he started, he was obviously much smaller, and now it is much bigger than Titan I Plus. So, and the strategy that he adopted to disrupt that business was the pricing strategy. So he priced his specs really well. And उसका क्या था कि आप टाइटन के स्टोर में जाओगे तो आपको अलग अलग फ्रेम का अलग अलग प्राइस दिखेगा. यहाँ पे उसने सारे फ्रेम का एक ब्रांड बना दिया, पूरे ब्रांड का एक प्राइस कर दिया, और इससे पावर पे भी वो नहीं किया कि अगर आप हायर पावर लेते हो वर्सेस आप लोअर पावर लेते हो प्राइस सेम है. He said कि law of averages work. So basically the person who is buying for the higher power versus the person who is buying for the lower power, right? The lower power वाला बंदा is subsidizing the higher power वाला बंदा. So that simplified pricing a lot, which was not there in Tata But they Titan are I Plus. still not
EBITDA positive, are they? I mean, I think, like they have been in the business for quite some time, but is Lenskart EBITDA positive yet? In India, they make money. They are almost break even or slightly bit positive. So when I was there, they actually made money. Almost at in India they are a bit positive. Globally they are not because they are burning money in Dubai, they are burning money in US. India में तो पैसा हल्का फुल्का बनाते हैं, बाहर नहीं बनाते हैं. इंडिया में भी मार्जिन बहुत थिन है, बट बनाते तो हैं पैसा. So they are doing well. And anyway, वो तो he can always reduce marketing spend. I know Lenskart के numbers. They can reduce marketing spend a bit and they can make money even now. They are burning money mainly in Dubai, in Singapore, and in US. वहाँ पे पैसा जाता है. So it's a decent business. It's not as bad as, let's say, what other tech businesses are doing, right? Maybe let's say a Paytm which is burning a lot of cash, or let's say a Nika. Nika is still positive, but let's say a Zomato which is burning a lot of cash. So Zomato and Paytm are still burning a lot of cash. Lenskart is very decent. It is very close to profitable, and it actually does become profitable in certain months. So I think we are in the age of disruption. A lot of businesses will get disrupted in the next 10 years, and that is I'm really bullish on the microcap space as well, because you never know which microcap will eventually become the next Ambani group or the next Tata group, right? So that is why I keep on hunting this microcap space कि भाई कुछ अच्छा मिल जाए which can actually become the next Ambani or the next Adani, because if that happens we may be looking at a very good wealth creation journey, right? So that is my thesis for that is my disruption is the important word here. I think a lot of businesses will get disrupted, and that is predominantly the reason why I actually keep investing in microcaps, because I know some of them will become really, really big, and that would lead to tremendous wealth creation. So, yeah, those are my thoughts on the microcap space and Nifty and disruption. Yeah. Okay, cool. So, we had Sushilji here from the other account, from the KDnomics account, but I guess he's having some network issues here. We'll try. Okay, I think we're connected. So, Sushilji, can you talk now? Is it a good time or? I hope my voice is loud and clear because I'm still on the road and I Yes. don't wish to irritate people. No, no, your voice is fine. We can hear you fine. No background noises yet. So I just stepped in back So, again and was just listening to very interesting things Aditya was talking about. And from my initial views, as a trader for the short run, I shared what I thought. So I'll step in again, Rima, when I have anything meaningful to talk about. Yeah. yes, works. A lot of people have a lot of questions for you actually. So, Hmm. I don't know if you can take those now. I can try. I can always try So that. That's not an issue. yes. So, who had a question before for Sushil sir? I'd asked you to, okay, Shubh is there. There was somebody else also actually. Sachin wanted to ask something. Sachin was trying to ask. Yes. Sachin, So, you can go Sachin, if ahead. you go Okay. ahead, you had, yeah, Hello. and after that, Shubh, I'll come to you. Yeah. Okay. Go ahead. हेलो सर. ये करेक्शन जो बैंक निफ्टी में 25% आने वाला है, तो इसमें आपने पहले राय दी थी कि पीएसयू बैंक में बेचूंगा नहीं, तो क्या ये करेक्शन फाइनेंशियल जो कंपनीज है उसको ज्यादा बहुत बड़ा झटका लग सकता है? फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस या महिंद्रा, ऐसा जो कुछ है फाइनेंस कंपनी. I hope he can repeat his question again. I really could not understand it fully. Actually, even we could also not, I could also not get your question. So if you can, say that again a bit more clearly, like, ओके ओके ओके. मैं मेरा एक क्वेश्चन था कि ये 25% बैंक निफ्टी में अगर करेक्शन आता है, तो इस सर ने पहले बोला था कि पीएसयू बैंक मैं बेचूंगा नहीं, तो क्या ये करेक्शन का झटका फाइनेंशियल कंपनी को लग सकता है, जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है उसको? नहीं भाई, ये कोई मेरे को नहीं लगता है कि कोई मार्केट वाइड पूरी थीम बन रही है या इंटायर सेक्टर वाइज बन रही है. दुनिया भर के फाइनेंशियल स्टॉक्स भी है जिनमें सॉलिड बाई सिग्नल्स है. तो मे बी दिस इज अ डिसेप्शन ऑफ ट्रेडिंग which will also work from time to time, and some people can choose to dismiss it. But the mature thing is, even every struggle in life, every struggler, every warrior, every battle has to tackle deception properly. So एकदम उठी हुई जो लगती है कंपनी इंडिया बुल्स,
हाउसिंग फाइनेंस, उसमें अब लॉन्ग टर्म पैटर्न अगर अभी आ रहा है बाई का, और मैं बोलूंगा कि निफ्टी जब तक गिरेगी नहीं नीचे 15,000 तक, तब तक मैं लूंगा नहीं, तो दैट विल बी ए फॉली, बिकॉज बाय द टाइम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 95 वाला हो सकता है 150 भी हो जाए. So I'm not looking at a sweeping sectoral move. Some of the largest banks that have had acted very diffidently in not making any meaningful correction, or for that matter even in capital goods space, आप देखोगे ABB, Siemens, Cummins are world class companies. वर्ल्ड क्लास कंपनी से तो इसका मतलब क्या है, सांस तो सबको लेनी पड़ती है, इनहेल एंड एक्सहेल एवरीबॉडी विल हैव टू डू. ये इनहेल ही इनहेल करके एकदम स्ट्रेटोस्फियर पे टिके हुए थे. In this latest rally of Nifty, all of these stocks were actually coming down. So please don't impose your own personal opinion of what quality the company is when you are studying stock prices, or taking a wager on prices. So I just see ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank getting into deep weakness for now. Some other stocks will go up. But because it drives Bank Nifty, and maybe SBI and Kotak Mahindra will stay strong for next 3-4 days, maximum 2-3 days, and then they all come down. So 25% decline in the larger glamorous looking banks. I'm still of the opinion we will not sell PSU banks. हमें वेट करना है, मे बी 8%, 10% maximum, और फर्दर करेक्शन के बाद your the kachra, the so-called kachra banks of prior years, like your PNB or a IOB or a UOB, they will all be screaming wise. So to answer your question pointedly, I'm only looking at the deep, so to say deep, 20 से 25% का correction on the largest good looking banks. I'm not looking at this as an entire financial sector crisis or anything. No way. It's a very stock specific market right now. Okay, so I hope that answers your question. Okay, Shubh. Shubh, I think you can go ahead now. हेलो सुशील सर. सुशील सर, मुझे ये पूछना था आपसे कि जो बैंक निफ्टी का हम भी अगर वीकली चार्ट स्टडी करते हैं तो सर इनकी आवाज चली गई. Can you request him to pull the microphone closer to his mouth? So I could hear him actually. So, okay, Shubh, again, repeat if you can. हेलो सुशील So, सर. सुशील सर, एक्चुअली आई वांट टू आस्क यू, जो हम वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का देखते हैं तो उसमें हम WXY पैटर्न में है या ABC पैटर्न में चल रहे हैं? और सर एक सेकंड क्वेश्चन हो रहा है, फेडरल बैंक का क्या हमने फर्स्ट वेव कंप्लीट कर लिया है? क्या क्या फेडरल बैंक 75 आ सकता है? मेरी आपसे एक गुजारिश है, ये इलियट वेव ना किसी के साथ फोन पे भी मत डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि वेव के पेट में वेव होती है, वेव के अंदर वेव होती है. आप कौन से टाइम होराइजन की और कौन से स्केल की वेव को पॉइंट कर रहे हो? दो इलियट वेविस्ट भी एक दूसरे को फोन पे बात करने में पूरी तरह इरिटेट कर सकते हैं. तो यहाँ जब बाकी के 400-500 लोग हैं जिनका इलियट वेव से खास वास्ता नहीं है, लेट अस प्लीज नॉट टॉर्चर देम. एंड इट्स अ मैटर of semantics whether it's a WXY or an ABC. जाना इनको नीचे ही है. डिसीव एवरीवन ऑन द निफ्टी ऑल्सो, और ये सारे छोटे वाले बैंक भागना शुरू हो जाएंगे. और इलियट वेव्स की बात ना, ये सब ऑन ऑडियो कॉल वी शुड नेवर डू. इट इज इरिटेटिंग टू एवरीवन. श्योर सर, मैं ध्यान रखूंगा आगे से. क्योंकि वो समझ में नहीं आता ना कि आप किसकी उंगली बोल रहे हो, बोला उसकी उंगली, वो कौन, बोला उसकी बहन, वो किसकी बहन, बोला वो अपने भाई की बहन. So we can't point out things. It becomes very vague communication and taxing on the brains. So we should discuss Elliott waves when we have a chart in front of us on a Zoom call or on a face-to-face call. सर, हाउ टू कनेक्ट विद यू ऑन अ फेस कॉल सर? अब वो सब छोड़ दो यार, क्या करोगे? आप अपनी मेहनत करो, आप अपनी रिदम को ट्रेड करो. Nobody can do anything for anyone else. You are the master of your own destiny. थैंक यू सर. okay, so
Okay, we have some new people in. So I think we can take some new people, and I want to end it by 11ish, because trying to maintain a schedule here. No point like keeping it going throughout the entire night. I mean, we did that, but it's not possible all the time. uh, Sometimes we should be like disciplined as well. So yes, just trying to listen from as many people as possible in the meanwhile. So okay, who do I have missed? Nilesh, would you like to go ahead now? Nilesh Sankpal, would you like to go ahead now? Okay. If not, Yuvraj Sen, would you like to go ahead? हेलो. Hi. Yes, हाँ, please हेलो, go. गुड इवनिंग मैम. जस्ट एक चीज पूछना है. मैंने एक्चुअली ना दो स्टॉक खरीदे थे, सो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो सही है क्या? वो थोड़ा सा बता पाएंगे? एक है GETND एंड अनदर वन इज ग्रीन पैनल. हेलो. सर हेलो. सुशील सर, मेरे लिए तो रॉन्ग नंबर है. मैं आंसर नहीं इसका. सॉरी आई मिस्ड, क्या बात हो रही थी? सर पता नहीं सर, थोड़े अलग से स्टॉक थे, मैंने सुनी पहली बार है. सर हेलो. रिपीट करोगे? हेलो. हाँ रिपीट करोगे प्लीज. सर मैंने एक्चुअली दो स्टॉक लिया है आज, तो शॉर्ट टर्म के लिए वो सही है क्या? थोड़ा बताएंगे. वन इज GETND एंड अनदर वन इज ग्रीन पैनल. हेलो. किसी का शॉर्ट टर्म 5 मिनट है, किसी का हाँ, we 5 घंटे heard है, you. We किसी का heard 5 you. दिन है. So, और ना सौदा या तो करो नहीं, और सौदा करो तो डरो नहीं, और अगर डर लग रहा है तो अगले दिन सवेरे काट दो. डोंट सीक ओपिनियंस ऑफ पीपल, फोकस ऑन एनालिसिस एंड एक्ट अपॉन इट. ओके सर, गिव अप द थैंक हैबिट. यू. गिव अप. सौदा कर लिया फिर क्या सोचना, अपना स्टॉप लॉस डालो, बात खत्म. स्टॉप लॉस लग गया, कहानी खत्म. ओके सर, थैंक यू. and please try to like avoid stock specific questions. You guys also comment asking what stock specific questions. We do not give buy or sell calls here. This is not your morning TV shows. They do that there, so you can of course like try it there, but we don't do it here. And anything that we share here is in our personal capacities, and we strongly advise you to consult your financial advisors before like making any decision based on whatever we discuss here. So yeah, just a small disclaimer for all of us here. Okay, Karan Keshri, Karan, if you're around, there is some other Karan here also with us. So if you're around, if you'd like to go ahead, please go ahead now, or we'll have to move some people down and to take some new people in. Okay, thank you for giving me the chance. Can I ask something different from Nifty and Bank Nifty? You can take your Prima. Hello. You be here, just काफी लोग हैं यहाँ पे जो ज्यादा बोल नहीं रहे, but so just to make space for new people. Yes, Karan. Okay, depends on the question. Go ahead, ask if anybody of us can answer, or if Sushil ji is up Okay. for it, answer for sure. Go ahead. So, okay, I track a lot of the commodities market. I see and see I do different kind of fluctuations in a day. Is there anything that you can guide me, as I have a business of different goods which are deeply affected by the commodity market like NCDX? Okay, so Karan, have you ever traded in commodities yet? No, I generally just do crude oil. Yeah. I don't do anything else, and that too very not that often. I would just I like not. I don't have any comments on that. Yes. So probably like I don't think we can comment on your questions yet. So okay, just moving on. Um. Okay, adding in some more people. I think there are enough people. I think they've not spoken yet. Has Yogesh spoken? Otherwise, we have Vipul Gandhi. Yeah.
Mehul, we'll just come to you in a bit. Let us just ask from the older people if they have anything. Yes, Yogesh ji, first you, and then we'll come to Vipul ji. So, Yogesh, go ahead, please. या वेरी गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन सुशील सर से ही है। सर एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का आउटलुक आपका नेक्स्ट 1 मंथ के लिए क्या आ रहा है? हेलो I'm not sure he's हेलो there, bro. I'm not sure if he's there. हेलो आई एम ऑडिबल? हेलो Yes, Hanji, yes. you're audible. You're audible. आई एम ऑडिबल। मेरा क्वेश्चन सुशील सर से है। हाँ, सर we heard you. एक We heard मिनट। you. We heard you. I'm यस saying I'm not sure if he's there. हेलो सुशील सर है या? I don't हेलो think he's करण जी। here. Okay, he cannot hear. Okay, I don't think he's here, else he would have answered you by now. So yes, okay. We'll come back to that if if we can connect back to Sushil ji. He's traveling, so sometimes he cannot speak. So okay, ओके। Vipul ji, over to you. Please go ahead with your views. Madam, there is a simple question. Apart from Nifty and Bank Nifty, can we invest in Nifty? Sorry, apna ITBs. That is a ETF. Currently, it is a 28 for 1 year purpose. Vipulji, so again, we'll just repeat the same thing. This space is not about it, but yeah, of course, like whenever the right time comes, like you can invest in chunks if you're bullish about that particular sector or no, right? So Yeah, this space is it not is about that. my question is only I'm asking a future about IT sector. I don't know the future, sir. Currently, it's like not very good. Present is not very good. Future, we'll see. But yes, of course, like in chunks, addition, of course, our IT companies are doing fine for themselves. So yeah, but no recommendations, huh? No recommendations, yeah. For long term, 1 year, 2 year? No idea, sir. I'm a trader. No idea. Okay, thank you. So okay, Mehul ji, go ahead, please. Try, there's a request for everybody. Try not to ask much questions today. Sushil ji is a bit away. It is, like, thankfully we have him at times, but he is somewhat away. So try to stay away from questions. If you have any views or thoughts, please share that. So yes, Mehul ji, go ahead, please. गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा क्वेश्चन सुशील जी के लिए ही था। सिंस ही इज अवे, आई वुड रिक्वेस्ट अगर वो है तो एक बार रिप्लाई कर दे, बिकॉज दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई गॉट अ चांस टू इंटरेक्ट विद हिम। अगर वो है तो आई कैन आस्क माई क्वेश्चन। इफ ही इज अनअवेलेबल देन इट्स फाइन, आई विल ट्राई सम अदर डे। बट सुशील सर, अगर आप हो तो प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो इफ यू आर देयर। झूठ मूठ में फुटेज खा रहा है, मैं हूं ना, सबसे ऊपर ही तो दिख रहा हूं ना। सर मैं फुटेज नहीं खा रहा। सर रियली पूछो क्वेश्चन। नहीं, इससे पहले एक दो लोग ने पूछा था तो आप अनअवेलेबल थे। पहली बात तो सुशील जी, सुशील सर, जय श्री कृष्णा, वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। एक रिक्वेस्ट है, केडियानोमिक्स में पता नहीं क्यों कुछ सालों से मेरा अकाउंट ब्लॉक है। आपने ब्लॉक कर रखा है, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर उसको अनब्लॉक किया जाए, पहली बात। दूसरी चीज, सुशील जी, आई एम रियली अ गुड फैन, बिग फैन ऑफ योर्स। और एक बात खाली आपसे पूछनी है कि आप जो इतना ब्लंट हर जगह पर बोलते हो, एंड रियली बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। और मैं ये कोशिश करता हूँ जहाँ पे भी मेरा मीडिया इंटरेक्शन होता है, मेरा मेरा आइडेंटिटी हर किसी को यहाँ पे पता चल जाएगा। बट सुशील जी, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं वो आइडेंटिटी भी बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये बताना है कि कॉन्ट्रा व्यू आप जो लेते हो, तो उसका हिम्मत आप लाते हो, बट मीडिया में उस चीज को एरोगेंस ना लगे, लेकिन हम अपना कॉन्फिडेंस दिखाए, उस चीज को आप कैसे ट्रीट करते हो, कैसे मैनेज करते हो कि सामने वाले को ये ना लगे कि हाँ ये बंदा एरोगेंट है, बट ये बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो इस चीज को कैसे मेंटेन किया जाए सर, आप प्लीज मुझे बताइए।
आपने 4 बातें कही कि एक आपको ब्लॉक कर दिया गया कैडियानॉमिक्स के हैंडल से। होल्ड कीजिएगा 1 सेकंड। या हाँ हाँ ठीक है। गेट नंबर 1 डिपार्चर एरिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ओके फाइन फाइन बाय, आई विल सी यू सी यू सी यू। हाँ देखिए ऐसा है, तो आपने कहीं ना कहीं जरूर कोई कांड किया होगा, वरना इतने सारे लोग हैं, ब्लॉक बिना कांड के कोई होता नहीं। एंड आई डोंट इंटरफेयर इन दोस डिसीजंस, हैव गॉट सम पीपल हु मैनेज इट, सो लेट थिंग्स बी द वे दे आर, क्योंकि आदतें सुधरती नहीं है। और फिर भी अगर आप ऐसा है तो यू कैन write an email to support@kdeconomics.com, but it doesn't make any difference. Tweets करते रहते हैं कैजुअल जगह। Secondly you said that you are a very big fan. मेरा मेरा पर्सनली ये मानना है, एक किसी का भी फैन किसी को बनना नहीं चाहिए, और अगर कोई जेन्युइनली किसी का फैन है ना तो बिग हो ही नहीं सकता। एडमिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लव, and love and humility go hand in hand. Nobody can be big in love. Love happens only when you can make yourself so small and give all the adulation to the loved one. The big fan is an is an abuse of language. इसमें भी है ना, मैं आपका बिग फैन हूँ, मैं बिग फैन हूँ, आई शुड हैव सम स्पेशल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। देयर वाज वन गाय हु यूज्ड टू ट्रोल, तो उसको उठा के ब्लॉक कर दिया। उसने फोन किया, क्यों भाई मेरे को ब्लॉक Sir, क्यों किया I है? meant was I really admire you. अरे रुक जाइए, मत कीजिए इतना एडमिरेशन, बोलने दीजिए थोड़ा सा, इतना मत एडमायर कीजिए। तो बंदे ने कॉल किया, मुझे ब्लॉक क्यों किया है? तो बोला हमें नहीं पसंद आपकी बकर बकर, हमने कर दिया। पर आपको मालूम है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप मेरे को ऐसे कैसे ब्लॉक कर सकते हो? तो बोला भाई या तो फैन होगा या बड़ा होगा, बड़ा फैन तो होता ही नहीं है। बोला नहीं नहीं आपको अनब्लॉक करना पड़ेगा। बोला जी नहीं करते। मैं सुन रहा था, बकर कर रहा था वो किसी के साथ हमारे। तो उसने बोला देखो मैं 10 और हैंडल बना करके वापस आपको ट्रोल करूंगा। तो बोला ठीक है हम 10 को ब्लॉक कर देंगे। तो भाई ऐसा है ना, ये अहंकार और प्रेम दोनों संभव ही नहीं है। मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए दुनिया में बाकी के लोग मेरे पैर छुए या मुझे पेड़े ज्यादा खिलाओ पूजा के बाद। तो ऑल ऑफ दिस इज जनरल बैंटर आई वाज डूइंग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कॉन्फिडेंस originates from two things. Primarily confidence originates from innocence, and innocence can either originate from ignorance or it can originate from maturity. तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन होता है? पूरे गांव में जो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है ना, वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। आपने सुना होगा ना, आई विल नॉट रिपीट दोस एक्सप्लेटिव्स, पर सड़क छाप कुछ मवाली टाइप के होते हैं, वो बात बात पे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 5 letter words. So that confidence either comes from, can we request this other gentleman to mute when others are talking? Okay, so confidence originates only from innocence, and innocence has two different, very disparate, very opposing origins. Innocence can either originate from ignorance. एक छोटा बच्चा ignorant होता है, वो बहुत confident होता है, वो डाइनिंग टेबल पे से छलांग मार जाता है अपने डैड को देख के कि पापा गिरने तो देंगे नहीं, वो पकड़ लेंगे। और दूसरा कॉन्फिडेंस होता है एक मैच्योर इंसान का, और मैच्योरिटी की भी डेफिनेशन क्या है? इफ यू हैव acquired the faculty to ignore the irrelevant and focus only on the relevant, you will be able to live a life of innocence. So कौन क्या सोचेगा, अगर उसकी परवाह करते रहोगे तो आप बस उसी परवाह में लगे रह जाओगे। तो मैं आपके जितना सोच नहीं पाता, क्योंकि मैं अपने आप को ट्रेन करता रहता हूँ कि मैं सोचूं कम और काम ज्यादा करूं। तो मेरे पास तो यही आंसर है, और आपके पास अगर इसका कभी आंसर मिल जाए तो मेरे को भी सिखा दीजिएगा। पर मेरे को लगा कि हर चीज सीखना ज्यादा जरूरी नहीं है, ये सीखना ज्यादा जरूरी है कि हमें कितना सीखना है और कितना करना है। द राइट बैलेंस बिटवीन एक्शन एंड थॉट is what is going to create your output. If we keep thinking, we'll hardly be able to do anything. I'm not sure, Mehul, if what I told to you satisfied you, but that's the candid answer from me. Okay, sir. Thanks a lot. Reema, can you invite Mr. Kamal Visaria upstairs? He seldom speaks in public forum. He is a significant player. If he feels like talking, please invite him up.
Oh, I think he cannot be invited up. He's not joining. Anyways. हेलो सुशील जी। बोलिए कृणाल जी। गुड इवनिंग सुशील जी। आपने जैसे बताया कि ये बैंक निफ्टी में 25% जितना करेक्शन हो सकता है, देयर इज एनी फंडामेंटल रीजन और कोई सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही है, कोई रीजन की वजह से आएगा कि या फिर तो एफआईआई का जो अभी सेलिंग का फ्लो रुका है वो थोड़े टाइम के लिए पॉज रखा है, वापस सेलिंग आएगी? भाव के चलने का सबसे बड़ा कारण भाव होता है और बाकी के कारण उसके साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, तो आप जैसे बता रहे हो ताकि ये अभी जो प्राइवेट बैंक है वो ओवर वैल्यूड हो गए, मतलब भाव का मतलब? तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपको, पर अगर आपको कोई न कोई कारण इमेजिन का भाव घटते जाए तो बेचते जाओ, बढ़ते जाए तो लेते जाओ, बाकी की स्टोरी अपने अपने इंटेलेक्ट से मजबूर होकर हमें डिस्कस करनी पड़ती है। अच्छा, जैसे आपने एक कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बताया, ठीक है, कि वो थोड़ा बढ़ेगा फिर वापस नीचे आएगा। जैसे अभी मैं टेक्निकल देख रहा हूँ, ठीक है, जब से 2008 से 2008 में जो मंदी आई थी तब से वो वीकली 50 डीएम है, सॉरी, हाँ, वीकली उसका जो 200 डीएम है, अभी तक वो ब्रेक करके अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तो अभी ऐसा क्या बिगड़ चुका है कि कोटक बैंक ऐसे 25% गिर जाएगा? और वैसे ये ऑलरेडी प्री कोविड जो हाई था उनको 3 बार टेस्ट भी कर चुका है, और अभी सेफेस्ट बैंक और जो नियर टर्म में मतलब वो 2 क्वार्टर्स में 20 से 25% रिटर्न दे सकती है, ऐसी मुझे अभी तो कोटक महिंद्रा बैंक दिख रही। इसमें ऐसा क्या बिगड़ चुका है कि आप जैसे बता रहे हो कि वो गिरेगा? भाई साहब, मेरे पास इतना इंटेलिजेंस नहीं है, तो मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ कि मैं इतने गहरे सवालों को समझ पाऊँ। जब समझ नहीं आया तो आंसर कैसे करूंगा? और ये 200 डे मूविंग एवरेज वगैरह जो है ना, अच्छा, ये बिल्कुल छलावा है। आप भी इससे परेशान जब हो जाओगे तो आप ये सब देखना बंद कर दोगे। अच्छा, मतलब ये मूविंग एवरेज है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता मार्केट में, ऐसा बोल रहे है हो? ना, मतलब उसका मतलब है वो एवरेज 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 दिमागों को मूवमेंट देता रहता है। जो एवरेज टाइप के लोग है ना, उसको मूविंग अच्छा, एवरेज मूवमेंट देती रहती है। वो तो मुझे पता है कि बड़े लोग जो पोजीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनसे ही वो मतलब मूविंग एवरेज क्रिएट होती अच्छा, है, लेकिन Rima, I'll excuse myself out for 5-10 minutes. I've reached the place where I have to go and pick it up, so I'll be on the listener mode. Yes, hopefully you get your laptop now. So yes, okay. And okay, so we have Ashutosh ji next. So Ashutosh sir, if you're around, please बताइए, views दीजिए हमें on Bank Nifty, because we need to come back to the topic also. So over to you, sir. टॉपिक देख के ही नहीं आया। हाय आशु सर। हाय हाय करण, गुड इवनिंग। Prunal, please तो mute अभी yourself, and this goes to everybody. Sometimes you people are talking in between. This is, I mean, I don't know why you feel like, that we don't deserve the respect that, if somebody is speaking, let's not interrupt them. If you have something very important, there is a sign, you can raise your hand up and we'll come to you. Otherwise, it's very disruptive. So try not to do that. Else, like we'll just have to move you down. So yeah, okay. Ashutosh, over to you. यस यस Yes. थैंक यू। तो अभी मेरा भी व्यू यही है कि मार्केट मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही करेक्शन पेंडिंग है। और बहुत सिंपल होता है, मतलब मार्केट जिस तरीके से चला है ना वो बहुत ही वर्टिकल है। और मैंने आज ट्वीट भी किया था कि नॉर्मली प्राइस जो होती है वो मीन के अराउंड घूमती है, और स्टैटिकली अगर अपन देखें तो माइनस स्टैटिकली जो सिग्निफिकेंट है वो ये होता है कि -2 से +2 स्टैंडर्ड डिविएशन रहता है, जो 95% मूव कवर करके चलता है। 5% फिर भी हम मानते हैं कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो ये जो मूव स्टार्ट हुआ, जो मैं यूज करता हूँ, मतलब 3 मंथ का एक एवरेज अगर हम लेते हैं तो बहुत ही वर्टिकल रहा, मतलब -2 SD से +2 SD एकदम फटाफट चला गया है। तो इस तरीके के जो राइजेस होते हैं ना कहीं ओवर स्ट्रेच होते हैं, और वो दिख भी रहा है चार्ट में। तो यहाँ से एक फॉल
बनता है उसका और कितना जाएगा, मतलब आगे पूरा रिवर्सल। चैलेंज क्या होता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अब ये मार्केट रिकवर कर गया एक साथ, और स्विंग के जो प्रीवियस रिजेक्शन जोन्स थे, जैसे निफ्टी में अगर हम देखें तो 17,800 से रिजेक्शन आया था इससे पहले, और ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का करेक्शन हमने देखा। उसके बाद ये सीधा रिकवर कर गया, अब उसी के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, और लास्ट 3 दिन से हम देख रहे हैं कि रेड कैंडल्स बन रही है वहां पर, कहीं ना कहीं सप्लाई है। डेटा भी देखेंगे अपन तो अभी बेरिश ही है कुल मिला के। अब इसके बाद जो डिप आएगा ना, दैट विल बी इम्पोर्टेंट। यहाँ से सीधा स्ट्रेट अवे ऊपर जाने वाला है मार्केट, उसके चांसेस 5% ही आप ऐसा मान के चलो। सो 95% जो प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट होएगा। अब उस करेक्शन में ये कितना डीपर जाता है ये टाइम विल टेल अस। मतलब वो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जो ऑब्जर्व करना है, एक बार ट्रेंड सेट होगा नीचे की तरफ अगर चीजें जाती है तो उसको हम इवेल्युएट करेंगे, और अगर सपोर्ट आके फिर मार्केट बाउंस करता है दोबारा दूसरे अटेम्प्ट में, और अगर अभी के स्विंग हाई ब्रेक करता है, देन विल कंसिडर इट कि हाँ भाई मार्केट पूरी तरीके से एक बॉटम बना के ऊपर जाने की, मतलब एक कंफर्मेशन आ जाता है कि यस दिस इज द पैटर्न जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। सो अभी यहाँ से मैं लॉन्ग कंप्लीटली अवॉइड करूंगा, और अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्विंग लो टूटेंगे स्ट्रक्चरली, तो वी विल ऐड मोर शॉर्ट्स। दिस इज माई ट्रेडिंग आइडिया फॉर गोइंग फॉरवर्ड, मतलब आगे आने वाले समय के लिए अभी फिलहाल यही आइडिया है अपना। थैंक यू। आशु सर, एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन क्या है, डिस्कशन ही है, मतलब क्वेश्चन। सर अब यहाँ पे कॉन्ट्रा चीजें भी देखते हैं, एज इन लेट्स सपोज दैट वी नो वी मेक अ, जैसे स्विंग लो टूटा, जो भी टूट 570 टूटा, लेट्स से 350 आया, 250 आया, व्हाटएवर लेवल्स, छोटे लेवल्स का पूरा दिन बात करते ही हैं। बट व्हाट इफ वहां से बाउंस बहुत इम्पल्स हुआ, तो वहां पे क्या आपको, आपका मतलब वो अगर होगा, ये मतलब डिप जो आता है ये करेक्शन तो हेल्दी माना जाएगा। अब उस करेक्शन में अपन ये देखेंगे जो पूरा मूव है नीचे से अभी तक का जो इम्पल्स है, अगर ये मान लो टेक्निकली चलो 50% तक भी हो जाता है, इट इज ओके। 50-60% के आसपास से अगर हमें स्विंग लो मिलता है और एक अच्छा इनगल्फिंग पैटर्न या कुछ सॉलिड वॉल्यूम के साथ बाइंग मिलती है, तो डेफिनेटली वहां से एक लॉन्ग फिर से ट्राई करेंगे लोग, है ना। मतलब एक करेक्शन का यस। वेट कर रहे हैं अपन। हाँ, उसमें फिर चैलेंज होता है। देखो चैलेंज हमेशा पुलबैक में होता है, यू नेवर नो कि कौन सा पुलबैक रिवर्सल है ना। अभी तो ये डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल क्लियर है कि सेट है। इस बार का वेव इतना बड़ा बना कि यहाँ पे अब चैलेंजिंग हो गया कि ये करने क्या वाला है, लेकिन एक ही साथ स्ट्रेच कर गया ना, इसलिए करेक्शन थोड़ा सा डीपर होएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी है उसकी। और अगर मतलब थोड़ा सा ऐसे जिगजैग बनाते हुए ऊपर जाता है ना, मतलब थोड़ा डिप लेके फिर ऊपर जाता है ऐसे जिगजैग बना के, मतलब पुल बैक बीच बीच में दे देता है, तो अपन थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं। थोड़ा सा फिर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इमर्ज होता है। ये जो यूफोरिक टाइप के जो वर्टिकल राइज होते हैं ना, ये हमेशा प्रोन होते हैं कि एक जब भी फॉल आएगा ना तो फिर वो थोड़ा सा डीपर होता है। रीजन उसका ये होता है कि लोग स्टॉप लॉसेस बहुत टाइट होते हैं, और एक बार जब लेना चालू करते हैं ना शॉर्टर्स, तो फिर वो खींचते बिल्कुल, जाते हैं। हाँ यस यस, फिर वो खिंच जाएगा मतलब। पर सर याद है वी वाज टॉकिंग इन लाइक फ्यू मंथ्स बैक, कपल ऑफ मंथ्स बैक, जब वो नौ नौ डेली रेड कैंडल्स बनी, अब 9 डेली यस ग्रीन बन गई, यस है ना, यस अब यस उसके बाद 3 रेड बन गई, तो मतलब इट्स जस्ट वेरी बहुत ऑब्जर्वेंट काइंड ऑफ मार्केट हो गई है। मतलब इसको ऑब्जर्व करके इसको इसको एक्चुअली पकड़ना ना बहुत देखो मार्केट डिफरेंट में है। बिल्कुल चैलेंजिंग है। ट्रेडिंग अभी इजी नहीं बची है। ट्रेडिंग बहुत, हाँ जी। ट्रेडिंग तो हमेशा चैलेंजिंग होती है, लोगों को लगती है इजी है, बट इट इज नेवर इजी। तो नॉट एट ऑल। ट्रेडिंग इज द टफेस्ट बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, मैं बोलता हूँ, और यस इट्स सर, नेवर इजी। डेफिनेटली। तो वो तो ये है कि अपन व्यू कुछ भी बनाए, मार्केट का लाइव मार्केट में क्या प्राइस एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना होता है। अब देखो हम लोग सब सुन लेते हैं, जो नए लोग होते हैं उनको कुछ भी बता भी दो, लेकिन जब ट्रेड एग्जीक्यूट करने की बारी आती है ना, और जहां ट्रेड उल्टा होता है, और मार्केट अगर मान लो दिन में 2 बार डायरेक्शन बदल देता है, तो आधे लोगों के तो स्टॉप लॉस लग लग के वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं और मेंटली पैरालाइज हो जाते हैं, और एक ना एक साइड वो दब जाते हैं, फंस जाते हैं। मतलब फिर वो ऐसा होगा कि लॉस दिखेगा और वो कट नहीं कर पाएंगे। बस यही मार्केट करता है, और उनका पैसा डुबा दिया जाता है, मतलब वो खुद ही लूज कर देते हैं, ये मान के चलो। तो उस ट्रैप से बचना है, स्टॉप लॉसेस लगे और भागना है अपन को कहीं ना कहीं। मतलब इतना स्पेस रखो कि आप मल्टीपल टाइम ट्रेड कर पाओ विद कंफर्ट विद सेम पोजीशन साइज। तो इसीलिए कैपिटल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। जो उसको हैंडल कर लेता है वो कितनी वॉलेटिलिटी सहन कर सकता है। राइट, नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। रिस्क टू रिवॉर्ड इज द मस्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन, इफ यू वांट टू सर्वाइवल कर लोगे तो सब कर लोगे।
सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे मार्केट? सुनीता ने बोला भी था ना एक बार कि आप 20 बार का स्पेस रखो, 20 बार में से 20 बार तो गलत नहीं जाओगे ना। मतलब Of एक बार course. रिस्क टू रिवॉर्ड आपका अगर ज्यादा है और स्टॉप लॉसेस रीजनेबली मतलब अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, छोटे हैं और रिवॉर्ड ज्यादा है, तो आप ट्रेडर बन जाते हो, आगे पीछे जाके पैसे कमाने लगते हो। लोग क्या होता है कि जब लॉसेस करते हैं ना तो बड़े कर देते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। रुकते नहीं है ना, स्टॉप लॉस नहीं लेते। यस। आशु सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। आई थिंक दिस वीक एंड द कमिंग वीक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। इंपॉर्टेंट तो क्या ही, इंटरेस्टिंग वुड बी द राइट वर्ड, बिकॉज हैविंग सेड दैट आई वुड जस्ट से कि इसमें ना इफ वी डोंट गो, अगर हम यहाँ पे गिरते नहीं है तो हम काफी इम्पल्सिवली, अगर हम गिरते नहीं है, वही बोल रहा हूँ, अगर हम गिरते नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो काफी तेज ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल होगा, वरना क्योंकि फिर अब क्या होगा कि नॉर्मली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी 95% है कि करेक्शन आएगा या आना चाहिए टेक्निकली, बट अगर नहीं आता है तो फिर आप मान लो कि मार्केट यूफोरिक मोड में जा रहा है, और अगर यूफोरिया आ गया तो यूफोरिया में फिर टेक्निकल भी फेल हो जाते हैं। बात ये है। हाँ, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। लेकिन यूफोरिया का रीजन क्या है? यूफोरिया का कोई फंडामेंटल रीजन भी तो होना चाहिए। मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे, मतलब कि ऐसा कुछ 1100 पॉइंट का ऊपर जाने का क्या रीजन था, ये भी तो देखो ना। हाँ खैर, मार्केट में तो खैर रीजन तो क्या ढूंढो, बट मतलब प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मतलब रीजन तो खैर सेकेंडरी हो जाते हैं। बट यस, फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग यूफोरिक मार्केट अभी तो नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा कुछ ग्लोबली एक ही चीज हो सकती है कि वॉर एंड होने वाला हो तो अलग बात है। जैसे कि वो लीक हुआ था ना, इनका पेंटागन के जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, उससे ये समझ में आ रहा है कि यूरोपियन नेशंस आर एक्चुअली एग्जॉस्टेड and they are not willing to मतलब supply more weapons to the Ukraine and they are suffering from high inflation. So अब वो सपोर्ट करना यूक्रेन को बंद कर सकते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मतलब वीक पड़ सकता है यूक्रेन। और अगर वॉर एंड होता है देन वी कैन सी दिस काइंड ऑफ मूव। अदरवाइज और कोई मुझे रीजन नहीं लग रहा है कि मार्केट यहीं से डायरेक्ट ऊपर जाएगा। उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुझे मतलब अनबिलीवेबल या अनएक्सेप्टेबल है। मतलब यहाँ से और ऊपर जाएगा मार्केट इन मतलब इसी मूव का कंटिन्यूएशन थोड़ा सा मुझे रेयर लग रहा है, विदाउट एनी डिप। डिप जरूरी है, मतलब ऐसा है। ऑल्सो सर, वो जो अब बैंक्स अगर थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अगर वो हल्का सा वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस तो नहीं बट उनकी स्ट्रेंथ अगर थोड़ा सा सबसाइड करती है तो वैसे ही निफ्टी तो वीक है ही। हाँ बिल्कुल, वो तो आईटी की निफ्टी में देखो आईटी वीकनेस है ही, बाकी रिलायंस भी को इतना दम नहीं दिखा रहा है। एक आध कोई सेक्टर इसके साथ आ जाएगा ना वीकनेस साइड में, तो फिर थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। मतलब अभी ये है कि आईटी और रिलायंस ही वीक लग रहे हैं, बाकी थोड़ा सब जगह बाइक माइंग दिख रही है। एफएमसीजी में भी मुझे थोड़ा सा आज लगा मतलब प्रॉफिट बुकिंग टाइप की, तो कोई सा भी सेक्टर एक आ जाएगा ना। हाँ यस यस, आज पहला साइन से लगे विजिबल हुए कि हाँ थोड़ा सा वीकनेस आ रही है, तो देखते हैं बाकी। जी सर, सही सॉर्टेड। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा सवाल सुशील सर से था कि हम मार्केट में जैसे अपना कोई व्यू बनाते हैं बुलिश या बियरिश, कई बार होता है मार्केट कहीं नहीं जाता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, जैसे अभी करंट सिचुएशन है। तो ऐसे मार्केट को टाइमिंग कैसे, कुछ कोई तरीका है प्रिडिक्ट करने का कि हम ट्रेड लेके बैठते हैं फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मतलब मार्केट कहीं नहीं जा रही है, ऊपर के भी एसएल खा रही है, नीचे के भी खा रही है, कहीं जा ही नहीं रही है। तो उसका कुछ तरीका है कोई कि मतलब थोड़ा सा समझ सके कि मार्केट कब ट्रेंड पकड़ेगा? राम सर, सुशील सर है नहीं, आई एम सॉरी, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। डॉक्टर साहब दे दे। हाँ राम जी, ऐसा है कि आप देखोगे जब ट्रेंड होता है, एक कोई बहुत ही पावरफुल ट्रेंड होता है, तो आप देखोगे एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि प्रीवियस डो के लो ब्रेक नहीं होता है और मार्केट एक नया हाई बनाता है एवरीडे। मतलब क्लोजिंग जो होगी ओपनिंग से ऊपर होती जाती है, बीच में एक आध दिन रोजी रोजी मिल जाएगा या एक आध दिन स्पिनिंग कैंडल मिल गई, बट हायर हाई एंड हायर लो के पैटर्न बनते हैं। फिर क्या होता है, जैसे आप 3 दिन से सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या होता है जब इनसाइड डेज कोई बड़ी रेंज बनती है, जैसे अभी 2 दिन पहले एक फॉल आया जिसने प्रीवियस 4 डेज के लो उड़ा दिए एक ही दिन में, तो ये एक रेंज बन जाती है। ठीक है, इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट रहेगा तब तक दोनों साइड के स्टॉप लॉस लगेंगे, ना बियर पैसा बना पाएगा ना बुल पैसा बना पाएगा। नीचे जाएगा बाइंग आ जाएगी, ऊपर जाएगा सेलिंग आ जाएगी। तो जब तक हम इस इनसाइड रेंज से बाहर नहीं निकलते, मतलब एक बड़ी कैंडल जो टॉप पे बनती है उसकी हाई एंड लो के बीच में जो कैंडल्स बनती है उनको इनसाइड डे बोला जाता है। तो दो
कल का दिन इनसाइड था, आज का दिन थोड़ा सा आउटसाइड गया नीचे की तरफ, पेनिट्रेट किया है हाँ सपोर्ट यही को, है कह ना? रहा हूँ सर, तो हल्का सा तोड़ा फिर ऊपर चला गया, हाँ, हल्का सा थोड़ा फिर ऊपर तो चला यहाँ गया, पे ट्रैप होते क्योंकि हैं। ये यस यस दिस इज द रेंज। टॉप एकदम से रिवर्स नहीं होते हैं। जब कोई चीज ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश होती है ना, तो वो क्या होती है, गिरती है तो नीचे से लोग बाइंग करते हैं, क्योंकि उनको हैबिट बनी होती है बाय द डिप। तो ये जब तक, अब इसमें क्या होता है, 2-4 दिन जब मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है, तो आप उन डेज के हाईज एंड लो पर फोकस करो। अच्छा। लोज एक हॉरिजॉन्टल रेंज बना रहे हैं, और हाईज जो है वो थोड़े से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? मतलब तीनों दिन के हाईज देखो नीचे हैं, और लो जो है वो एक लगभग हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं। अब यही क्रूशियल है, अगर नीचे का जो सपोर्ट बन रहा है वो ब्रेक होगा, तब फाइनली एक्सपेंशन बनता है मार्केट में। ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन को दूसरी तरीके से हम बोलते हैं कंट्रैक्शन ऑल्सो। उसके बाद जब मार्केट बहुत कॉन्ट्रैक्ट होता है और दोनों तरफ के स्टॉप लॉस लगते हैं, उसके बाद मार्केट एक बड़ा मूव देता है। तो बड़ा मूव जो देगा, वो अभी अपन को डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ जब तक ये दोनों बाउंड्रीज नहीं टूटती। अगर ऊपर की वर्टिकल जो कि डिसेंडिंग है वो तोड़ती है, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिसमें टारगेट होगा प्रीवियस हाई, जो बड़ी रेंज बनी है उसका। और अगर नीचे नीचे अगर जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन बनी है, अगर वो ब्रेक होती है, तो फिर फॉल आ जाएगा सीधा। तो यहाँ केयरफुल होने का तरीका है। मतलब तरीका क्या है, मतलब यहाँ पे आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा और फास्ट एक्ट करना होगा, मतलब इमीडिएटली आपको एक्ट करना है। हो सकता है ब्रेकडाउन फेल हो जाए, आज भी ब्रेकडाउन फेल हुए हैं, हो सकता है कल ब्रेकआउट आ जाए वो फेल हो जाए, यू नेवर नो। जब रेंज होती है ना और कंसोलिडेशन होता है, तो फाइनली मार्केट क्या करने वाला होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। और इवन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद भी फाइट हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिसीजिव मूव आ जाता है और सॉलिड वॉल्यूम के साथ अगर आपको डायरेक्शन मिलता है नीचे या ऊपर, तो उसको ट्रेड कर सकते हैं फिर अपन। ओके, थैंक यू वो सर। थोड़ा सा मोमेंटम देखना थैंक होगा यू, आपको, थैंक यू। किस तरीके से बनता है। थैंक यू। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सुशील सर, मेरा आपसे एक सवाल था कि आपका क्या व्यू है सर टू व्हीलर ऑटो स्पेस पे, थोड़ा सा पर्टिकुलरली सर टीवीएस पे और हीरो मोटोकॉर्प पे भी सर। सर कोई स्पेस वेस पे व्यू लेने लायक, जब पूरे सेक्टर में व्यू लेने लायक आएगा, व्यू आएगा। हमारा तो बहुत टाइम से था बजाज ऑटो में तेजी, और बजाज ऑटो की जब तेजी पिघलना शुरू होगी तो हीरो मोटोकॉर्प में शिफ्ट हो जाएगी। तब हम बजाज ऑटो से टेक प्रॉफिट बीच बीच में जब ट्रिगर आता है करते हैं, हीरो मोटोकॉर्प ऐड कर रहे हैं। और बाकी टीवीएस सुजुकी की चार्ट जो है, वो टीवीएस मोटर्स की चार्ट बहुत ज्यादा भागी हुई है, उसको गिरना चाहिए, हिसाब से गिरता नहीं है। तो हिसाब लगा के मतलब नहीं है, जो हो रहा है वो करेंगे। मूवमेंट साफ साफ मिल रहा है मोटोकॉप में और बजाज में, तो बस वहाँ है। टीवीएस में जब क्लियर मूवमेंट मिलेगी तब उसमें काम करेंगे, अनटिल देन शांति से बैठे हैं उसमें। ओके, थैंक यू। Hi, Sushil ji, I have 2 or 3 questions. Firstly, in a environment when we are at such a low VIX, do you see any sort of substantial up move in the markets? Historically, it's very difficult that it's happened at such low VIX, the market goes up. Secondly, your view on the US dollar index. It's right now at 102, 101, 102 levels. What are the impact of the USD INR based on the US dollar index? And thirdly, is that we've seen lately that all asset classes have moved together, like gold, silver, commodities, precious metals, and equities have moved together. So, I mean, how do you read this? So first thing, to assume that the VIX will stay low is an assumption. My whole bet is the compression of VIX is anytime going to reverse, and VIX is going to shoot up and shoot up incessantly, which is what is going to bring down markets. So that was first question. Second one, dollar index. I haven't checked right now. Last 1 hour I was on the road. 102 के अगर आज ऊपर बंद हो जाता है, तो I think that will be the second trigger for the coming short-term mayhem. We close above 102, whatever be the stops. I think it's a good for a move to about 109 then. So that is second. Third question you had was about USD INR and dollar index. तो देखो, एक इंडेक्स के साथ हर चीज को एक साथ इकट्ठे चलना जरूरी नहीं है. There are leads and lags, and for very good individual reasons. So broadly, yes, the index will impact all the constituents or related contracts.
but an index is an index. It's an average of things. So I think right now, USD INR is into a consolidation pattern, which is both sided. Let it resolve. हिसाब से ऊपर की तरफ इसको निकलना चाहिए, but it can always do that after a lot of delay. So absolutely one-on-one relationship संसार में अगर किसी भी चीज के साथ लगातार रहती, it would have created a risk-free situation, and using that risk-free situation, you could have made endless money. So ये थोड़े lead lag रहेंगे. And your fourth question was about all the asset classes moving together. all the assets moving together. Okay. See, in general, less correlated markets are in general less risky. So this question is a brilliant question actually. When everything has been so strongly related and still VIX has been sold off, a question rises on the table whose answer will only come once markets reverse. Until they reverse, it's an important question to keep in mind. High correlations is usually a high risk atmosphere. तो एक बार ये विक्स को नीचे दबा के, डॉलर इंडेक्स को नीचे दबा के, सबको फील गुड फैक्टर देके सारी एसेट्स में जितना भी लॉन्ग लोगों को लोड करा सकते थे, इज दिस वर्ल्ड विटनेसिंग दैट? देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग, बट अंटिल द रिवर्सल्स कम, the beauty as well as the challenge of all of these intellectual questions is they give you a very good kick कि मेरे पास दिमाग है, मैं बहुत सी चीजों को सोच सकता हूँ. बट समझदारी इतना सारा सोचने के बाद ये है कि भैया दिमाग मिला है तो एनालाइज कर लो, बादाम का तेल है या ये मूंगफली का तेल है. तो जब तेल की धार बन पड़े तो बस धार को देखो और धार के साथ चल पड़ो. So yes, it is a conundrum. How come all assets are positively correlated and VIX is so low? It seldom happens. So maybe the VIX is just about reversing, and once that reversal happens over the next few days, इस बाजार का मालिक सिर्फ भगवान बचेगा. Thank you. Sir, do you want me to add more people? We still have some people, so आपकी मर्जी, आपका स्पेस है. You are the host. If you feel like you're sleepy, you want to go and sleep, so you do that, and you want to continue to do the जन सेवा, you do that. आपका स्पेस है. मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला? okay. No, actually, इतने सारे लोग हैं, so I think they want to listen, and a lot of people have been wanting to hear from हाँ you तो and ठीक ask. है. Everyone knows you have Mother Teresa's nature. तो आप जगो और करते रहो सबको खुश. फिर कल सर पकड़ के सवेरे फर्स्ट हाफ में हेवी हेड रहना, वो आपकी चॉइस है. I will neither counsel you nor give you any suggestions. It's your show, you run it. No, that's okay. I mean, we are accustomed with sleeping at 4 and waking up at 9, so I think we are very used to that now. हाँ तो फिर जो जी And में आए करो, जो जी में आए करो. सर एक क्वेश्चन था. okay. बेसिकली अगर विक्स रूल ऑफ एवरेजेस के हिसाब से ठीक है 16 पे पड़ी है तो शूट अप होएगी वो तो. पर आप मैं थोड़ा स्पेस में तो लेट आया ही हूँ, तो बेसिकली आप किस विक्स शूट अप करेगी तो मार्केट शूट अप भी तो कर सकता है ऊपर की तरफ, तब भी विक्स बढ़ेगी वो तो आप किस अदर फैक्टर्स पे कह रहे हो कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है आपके हिसाब से? अच्छा, ये कौन से कैलकुलेशन से आपने बोला कि विक्स बढ़ेगी तब भी मार्केट बढ़ेगा? विक्स तो वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, वॉलेटिलिटी तो ऊपर भी हो सकती है ना अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो. अब ऐसे तो होने को कुछ भी हो सकता है, पर भाई साहब होता नहीं है ना. इन होने को तो आसमान भी सर पे गिर सकता है, वो तो इन और रात जनरल को आराम बात है. से सो के सवेरे उठोगे विक्स तो भी आसमान नहीं विक्स तो गिरेगा. अरे सर विक्स तो मैथमेटिकल इंडेक्स है ना, तो उसको आप बाकी किस फैक्टर्स पे देख रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ विक्स के अलावा. भाई साहब मैं एक बात आपसे कहूँ, बुरा मत मानना. मैथमेटिकल इंडेक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब कि उस वो तो एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ना.
ऐसे तो निफ्टी पीई भी जो है वो भी एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, जैसे अपन बोलते हैं अरे कि यार बात बड़ी सिंपल है. Volatility index is the price of volatility on an average. So if markets are behaving so confidently कि people have sold down the price of volatility, और जैसे volatility आएगी short volatility का सट्टा कटेगा, right? That is one practical way of looking at it. और ये mathematical value है, तो पूरे शेयर बाजार में हर एक वैल्यू तो डिराइव्ड वैल्यू है. ब्रह्मा जी का बनाया हुआ डायरेक्टली तो कुछ है ही नहीं शेयर बाजार में. करेक्ट, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ किन है. फैक्टर्स पे आप बोल रहे हो कि नीचे जाएगा मार्केट. मैं ना अभी एक्चुअली उतना डिटेल में आपको समझा सकने की इस वक्त मेरी क्षमता नहीं है, तो आप यूं मान लीजिए कि मेरे पास इस वक्त आपके सवाल का जवाब नहीं है. ओके सर, नो प्रॉब्लम. Okay, who do we have? Any if there's anybody I've missed, please go ahead now. And I can see Rohit ji here. So Rohit ji, if you're around, if you have a couple minutes to spare, please come up here and share your views with us. And Dhiren ji bhi nahi bol rahe. So Dhiren sir, if you want to go ahead Hi, anytime. hi. Hi Am I sir, how are you audible? doing? Good, good. Hi, Hanji Rima. sir, Hi, you are. Sushil sir. Yeah. So I think markets are in good form right now. Finally, we are back in the range for some time again. And after having couple of good trending days, अभी वापस से consolidation में चले गए. As day for yesterday we had this huge bar. तो जब तक ये बार का हाई एंड आज लो तो निकला है, लेकिन वापस से फिर हल्का सा एक होप है बेयर दिस थिंग के लिए. But being an expiry tomorrow, I won't be surprised if the first pullback after such a big trending move may be bought into. Okay, so point is 500, 400 and 600, these are all good support levels. ऊपर में 800 becomes obviously a sacrosanct resistance level. 800, 850, and I think once we are out of this range, 600 and 800 के बीच में से जो भी एक ब्रेकआउट देगा, like conclusively, the next round will again come into play. And as far as low VIX is concerned, I think I'm not bothered. Generally I've seen जब VIX low पे होता है, so it tends to stay there, for some time. It just doesn't just hits the bottom and just doesn't rise. So I think that 9 to 12 वाला जो range है वो थोड़ा time रह सकता है. Okay, that is what has been observed in the past. So I don't know why VIX is important, but it's not the only deciding factor the way you look at it. So VIX में बस वही है, जब VIX कम होता है तो you will not get very explosive moves. आपको 200-250 पॉइंट के मूवमेंट में भी खुश रहना चाहिए. And yeah, that's what it is. So I think I have generally observed till Bank Nifty is not weak, generally Nifty doesn't give up, and Bank Nifty is super strong. Except today it really showed weakness, but that it could be a one-off day. So I really want to see the follow-through, tomorrow and day after, and then we can say कि एक pullback आ सकता है. And for Nifty, I think for 17,400 is like the super strong support. जब तक वो नहीं टूटता, I think all dips could be bought into. Yeah. Okay, thanks Dhiren ji for your views. Um, okay, 1 second, just adding in some more people. Okay, Sarvendra ji is here with us. So, did I miss anybody here? Because a lot of people wanted to ask Sushil ji a lot of questions. So, if I've missed anybody, please go ahead now, or else we'll come back to you later. Let us hear Sarvendra. Yes, yes, yes. Just coming back to that. Okay, Sarvendra ji, please go ahead. A very good evening to everyone. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Good evening, or almost good night, but good evening. Yeah. Good night. Good. Yeah, it will be in another 50 minutes. It will be good morning actually. So yeah, so I would agree. I would agree that the overall setups. I would agree with Sushil ki jo readings hai. I think the key risk areas continue to remain the dollar index, how the USD INR is placed. That remains the key risk
as far as my readings are also concerned. And the other part that looks very risky for the markets to me is the US 10-year. The way it's still firm, and the way it's not wanting to go below 330, 340, and the way it keeps on reversing from there. And today is one of those days. I think clearly it's going to be a big one this time, and I maintain my targets around 5.25 on the US 10-year, which would be the wave one targets. The wave one completes there possibly, maybe, and then we will look for a wave two. So jab tak wo nahi hota, so from 3.6 to 5.25 will be a very painful journey. uh, Looks to be almost a repeat of 2008 to me, where in the second quarter crude rallied, and crude looks to me like a long term breakout. So gold, silver, crude, these were the three things which were rallying along with the dollar index, which were rallying into the second quarter of 2008, and that is where there was a lot of punishment for the markets. So I think that could be the case here also. And yeah, I would agree that broadly the risk areas to me also look the same, which is the dollar index, the bond yields, and the rupee, how it is placed. And not to say that the way Nifty, Bank Nifty have been placed, I think to me this is just a pullback, and the next leg down, since the next leg down already has started. I think परसों के high पे जो बना है, either from there or by max by tomorrow, I think you should see those reversals, and you should start you should see the markets now, both Nifty, Bank Nifty falling sharply. And I would assume that since Nifty 500 has broken the September 2022 low of 16200, so to start with I would say that 16200 is the target, and it should get broken for the Nifty for the next month and a half. It could be slightly earlier, but I have to give you reasonable time targets also. So another 20-25 working days, you should be breaking 16200. So that's the broad view as far as I am concerned, as of now, as of today. I hope that helps people. Yeah. ये बता सर्वेंद्र, 12,000 होगा कि नहीं निफ्टी? अरे सुशील जी, 12,000 तो बहुत, 12 क्या 11,000 पे भी स्टॉक्स चल रहे हैं, तो 12,000 तो हो ही गया है. इफ यू लुक एट BSE 500 constituents, नहीं stocks नहीं are नहीं नहीं, मुझे मुझे पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, खाली निफ्टी की बात बताओ. निफ्टी 12,000 होगा कि नहीं होगा? देखिए 12,000 होने का चांस मेरे लिए, आई वुड गिव इट अ 20% चांस राइट नाउ. बट प्रीवियस वेव 4 विच इज एट 14,200 एंड 15,200 अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे दो प्रीवियस माइनर वेव 4 हैं. ये दोनों टारगेट्स तो आने चाहिए, इधर 14,200 या 15,200, ये तो आ जाएगा. 3-6 महीने लगेंगे, बट आई थिंक इन दो में से एक टारगेट आ जाएगा. उसके बाद 12,000 वालों का क्या करोगे यार? नहीं 12,000 वालों का मेरे को कुछ नहीं करना है सर. मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि मैं तो आई विल गो स्टेप बाय स्टेप. पहला मेरा टारगेट 16,200 जो निफ्टी 500 ने तोड़ दिया है सितंबर का लो, उसके बाद फिर देखेंगे 15,200, और अगर बहुत आगे स्ट्रेच हुआ तो 14,200. ये सारे वेव 4 के टच पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई एक आएगा. अब इस समय कहना बड़ा मुश्किल है कौन सा आएगा, बट टू बी वेरी सेफ ये तो बोल सकते हैं कि 15,200 से पहले 16,200 तो आएगा ही आएगा. तो अभी यहाँ से 1,500 पॉइंट तो गिरना ही है बाजार को, मोटा मोटी जो भी 1,300 पॉइंट तो गिरना ही है बाजार को अभी. सो वो तो होना है, मतलब जो हाई ये गिरने में ज्यादा क्या गिरता लगता है? सॉरी, इस गिरने में सबसे ज्यादा गिरता हुआ क्या लगता है? आउट परफॉर्मेंस विल गेट पनिश. सो यू विल हैव FMCG, ऑटोस. आई थिंक ये तो दो लगी रहे कि इनकी तो धुलाई कस के होएगी, और बाकी तो जो गिर रहे हैं वो तो गिरते ही रहेंगे. सो योर ITs, योर मेटल्स विल कीप ऑन फॉलिंग, योर फार्मर्स कैन कीप ऑन फॉलिंग. बैंक्स? या बैंक निफ्टी तो मैंने बोला ना, बैंक निफ्टी आल्सो हैज टू गो एंड ब्रेक दैट सितंबर लो. सो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो मेरा थॉट यही है कि सितंबर लोज विल ब्रेक, सितंबर 2022 लोज विल ब्रेक. चलिए. So, okay. Would be interesting to see that unfold, So I hope I remember that in 3 to 4 months, like you said. So anyway, oh sorry, I muted everyone by mistake. Um okay, anybody else would like to give their views at this moment? Of course, we can go into an eternal discussion mode, but okay. I don't think I've missed anybody. So sir, क्या करे सर, एंड कर दे क्या? I mean, हाँ तो जबरदस्ती खींच के क्या मतलब है? हाँ, if we are done, we are done. And sir, काफी लोगों ने invite भेजा है, but I don't want to add in, just about anybody. So
there's somebody with some account name bicycle sir. अब इन लोगों को क्या ही add करूँ? I mean, um, I cannot do that. I don't want to do that. And a lot of people are wanting to have Rohit sir speak. So if you're here, like I'll आप लोग invite you. कैरी ऑन करो, 11:15 हो गया है. So I'll have to log out in 5 minutes. But if discussion chal raha and there are good speakers and there are intent listeners, why stop the show? But if the host itself wants to collapse in bed and get some rest, so it's your show, you decide. But if conversation is good, carry on. The invite तो काफी लोगों ने भेजा है. Okay, we have Rohit ji here as well. So okay, 1 second. So yeah, I think this will be the last three people that we hear from, and after that there is always the next time. Yes, Rohit sir, how are you doing? What are your views for Bank Nifty? Uh, your views on that? Thanks, Rima, on your multiple requests. I've taken it. I'm in a cab, but I just have one thing to reflect on. I'm sure everybody has multiple reasons why market should fall. There may be a short-term case at least, but there's one thing which seriously bothers me, and it is called sentiment. हिंदी में बोलूं तो यूट्यूब और सोशल मीडिया की जो महासभा है, स्पेशली यूएस के बाजारों को लेके, उसमें इतना भयंकर कंसेंसस कि रिसेशन यूएस में आएगा ही आएगा, तबाही मचाएगा ही मचाएगा, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है. और अगर ये कंसेंसस सही होता है, इट विल बी अ फर्स्ट इन माय लाइफ दैट सच अ मास कंसेंसस कि सबको मंदी लग रही और हो जाए. ये एक चीज है जो विच कंप्लीटली डजंट मेक सेंस. इफ एनीबॉडी कैन मेक सेंस ऑफ इट, कैन एक्सप्लेन, नहीं तो बाजार में कुछ भी हो जाता है. So because of this consensus, I'm not sure whether all the worst case scenarios that are being imagined will or will not play out. The apt strategy would be just to go with the market and the flow at a point of time. Hello. No, we cannot hear you. So I don't know. Yeah, was I that don't know it if you or? hear. Can you hear me now? Yeah, we can. We could hear you. I think Oh you were not talking the last no, I was 30 talking. So seconds or so. maybe then the network got me So because yeah, we could not hear. So if you because could. because I was in a cab. So I'm in a cab still. So I'll repeat myself. I said ki see there is enough of a case that markets can pull back. Maybe it is a short term correction. Is it going to be a bigger move or not? उसपे I just had one thing to highlight, and that one thing was कि जो YouTube और सोशल महासभा है यूएस बाजार को लेके, उसमें जो कॉन्सेंसस थिंकिंग है कि यूएस में मंदी आएगी, वहां पे रिसेशन आने वाला है और सब जगह तबाही होगी, इस तरह का जो कॉन्सेंसस है ये मैंने कभी अपने जिंदगी में देखा नहीं. और इस चीज का मतलब क्या है, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है. बट ट्रेडिंग विद अ कॉन्सेंसस looks like a very very tricky trade and not one that I'll be very comfortable taking. So we'll go with what the market is in whichever direction it is flowing. But if anybody has an understanding or a comment on
Whether they are able to see this consensus, I can see it. I don't know if others can see it. It's an across the board. मतलब सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है, यूएस में रिसेशन आएगा, तबाही आएगी. ऐसा तो मैंने देखा नहीं जिंदगी में भी, ऐसी कोई सिचुएशन हो और ऐसा हो भी जाए और सब लोग उससे बेनिफिट कर लें. That is very very awkward to me. No, but sir, what do you feel like currently? What do you think, like in the couple of a fortnight away, or a month away from now? What do you feel that is going to happen? Like, how will we react in general? Because it's been the gap ups and gap downs are, and the whole day is usually sideways, and 15-20 मिनट की movement में ना सब हो जाता है. तो या ओपनिंग आधे घंटे में या उसके बाद क्लोजिंग आधे पौने घंटे में, तो उसमें क्या है मतलब अभी कमिंग व्हाट डू यू फील कि इसमें मतलब इट्स गोइंग टू बी द रेंज बाउंड मार्केट और व्हाट फ्रॉम हियर ऑन? Am I audible, Rima? Yes, you're audible. I think Rohit ji is not much audible at the moment. I don't know if he's speaking. I think So he has a connection issue. It's showing connecting. Yeah, it's showing connecting. Yeah. When he comes in, then again you can repeat your question. No worries, no worries. We'll take some. Rima, there are a couple of people waiting, I guess, and then I whenever I we wanted can to. see I it. wanted. Rohit sir is here. Ah, Rohit sir yeah. is here. One second, please. Yeah, I can see that. So Rohit sir, try to connect back. We'd love to hear you complete what you were saying. Okay, so one second, I'll just yes. So we could not hear you, or I guess you spoke, but then Karan had a question for you, so we did not. I So Karan, would you like to ask me? I think because of the network, probably I'm getting dropped. Hmm. It's Am I, fine. am I So we can hear you now perfectly fine. yeah. Am I audible to you, Rohit sir? Yeah. Yeah. So, so very brief questions. I was just asking you that, like, coming fortnight or a month from now on, like, where do you think we are going to, will we range bound as per you, as per your counts, or will be, breaking out or breaking down somewhere? For in a very near short term, I'm talking about. For now, just like for the traders who are listening out, who are listening to us here. So yeah. So see, range bound is a very subjective thing ना. किसी के लिए 200 पॉइंट रेंज बाउंड होता है, किसी के लिए 1000 पॉइंट रेंज बाउंड होता है. अब 1000 पॉइंट का रैली तो आया है ना पिछले एक महीने में. So it was a one way up move. So some people will call it a one way up move, some people will call it a range bound. The question is, yes, after a 10-11 day consecutive up move in, say, the small cap index had a 11-day consecutive up move, can you get a correction over 10 days? Yes, sure, you can get. But I was only trying to highlight the big picture problem. The big picture problem is that the negative side of the trade is a consensus right now, especially at a global level. So you will have to be very specifically negative on India to be bearish on India. अगर आप यूएस बाजार को देख के इंडिया पे नेगेटिव हो रहे हो तो देन आई थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम. Do you May I think ask a question? practically it can? Do you think it can? Practically can make any effect on that? In the about the uncertainties that's there in the U.S. market. Do you think it can like realistically make any effect in Indian markets right now, or see in a couple 2-3 months or so? The markets don't always trade based on logic, na. They sometimes trade on sentiment. So that's why I'm highlighting the sentiment side of the problem, which is that even though everything may appear negative, गांव गांव का बच्चा बोल रहा है, and that is a problem to take the trade. So if you think it gets affected and if it goes down, कितना नीचे तक जाएगा? Like if you have it. मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात कि आपको खराब I'm just लगेगा तो भी नीचे नहीं जाएगा, खराब लगेगा तो भी नीचे नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि बच्चा बच्चा बोल रहा है. ऐसा नहीं होता है ना लाइफ में. और इसके अगेंस्ट कुछ लॉजिक है तो मुझे बताओ कि नहीं सर, मैं आपसे बिल्कुल आप सही बोल रहे गांव का आदमी जानता है कि यूएस में क्या होने वाला है. और ऐसा कभी हुआ है क्या हिस्ट्री में? Can I just ask Rohit?
Basically what I'm understanding from you is that it's all priced in already, and therefore the I move has don't to know. be. Yeah, maybe that's an angle. I don't know. If Sarvendra, if you have everything any is insight on this, Sarvendra, you can tell me if you have any insight on this. Every other logic is fine, but I am seeing this consensus which is not making sense to me. No, the consensus in US, I don't track it that religiously, but India में तो whoever is asking me is only asking me to what to buy in the dip. So यहाँ पे तो consensus उल्टा है, लोगों के दिमाग में मे भी थोड़ी बहुत मंदी हो सकती है, but सौदे में तो किसी के पास मंदी नहीं है. So I more look at the action than just the pure sentiment. और जितना भी एक्शन भी आ रहा है वो सबको लेना ही है नीचे में, ये एवरेज कर लूँ वो एवरेज कर लूँ. दैट्स बीन द क्वेश्चन टू मी. 9 out of 10 क्वेश्चंस आर ऑफ दैट काइंड ओनली टू मी. जब तक ये सवाल नहीं चेंज होंगे. पर और सर्वेंद्र सर, दैट्स द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ना, वो वाला वो नो व्यू. नो नो नहीं, सेंटिमेंट की जहाँ बात हो रही है, जब आदमी फोन करके आपको कुछ पूछता है तो उसकी आवाज में आपको समझ में आता है कि उसका सेंटिमेंट क्या है. तो अच्छा, सेंटिमेंट दैट अभी भी मीन्स लेने का ही है. 9 में से 10 में से 9 सवाल लेने के आते हैं. ये नहीं कोई पूछता कि क्या बेच दूं, पोर्टफोलियो में क्या कम कर लूं. तो जब तक यहाँ इंडिया में तो अभी तक केवल लेने का मूड है. इंडिया में आई डोंट थिंक कि वो सेंटिमेंट मंदी का है. और इंडिया में शॉर्ट पोजीशन है ही किधर. देयर इज नो शॉर्ट्स. सी एवरीबॉडी थिंक्स दैट देयर सम ग्रेट शॉर्ट्स हैपनिंग इन इंडिया. देयर इज नो शॉर्ट of the total wide market. एक तो पहली बार total wide market limit is approximately 10-15% of the overall available shares, right? जो NSE की market wide limit है, that's around 10-15% on an average. किसी का ज्यादा किसी का कम. ठीक है, of the total equity, of the total number of shares available. उसमें से भी 10% का हुआ है. तो मतलब पहले NSE की जो मार्केट वाइड लिमिट है उसको तो फुल कर लो, तब तो हम बोलेंगे ना कि लॉन्ग या तो शॉर्ट कुछ एग्रेसिव हुआ. जब इंडिया में ओआई में कोई ज्यादा वेरिएशन ही नहीं है, निफ्टी में 1-1.25 करोड़ का हुआ है लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं. ना तो कभी 2 करोड़ पहुंचा है, ना तो 50 लाख गया है. तो आइदर वेज कुछ होए तो समझ में आया ना कि लॉन्ग कटे कि ना शॉर्ट ऐड हुए. सो वहां से भी कुछ आता नहीं है. सो बचा क्या सेंटिमेंट, यही जो कैश सेगमेंट में या जो हमें क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, उनमें खाली 10 में से 9 लेने के ही पूछ रहे हैं. अभी तक कोई बेचने का किसी को हुआ ही नहीं. जब लोग खुद अपने आप बिना पूछे बेचना शुरू करेंगे तब हम समझेंगे कि इंडिया का सेंटिमेंट पलटा. और यूएस के केस में भी जितना मैंने देखा है थोड़ा बहुत है, बट इतना भी एग्रेसिव नहीं है. मतलब जितना मेरा रीडिंग है, यूएस कुड बी स्लाइटली न्यूट्रल एट दिस पॉइंट इन टाइम या स्लाइटली मोर बेरिश 60-40, बट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा है अभी भी यूएस मेरे हिसाब से. तो लेट्स सी. अपार्ट हमारे लिए पहला तो हमारा प्राइस एक्शन और काउंट्स हैं. सेंटिमेंट तो हम एड ऑन के लिए ले लेते हैं. सेंटिमेंट, मोमेंटम, वॉल्यूम्स, टाइम, ये सब एड ऑन्स हैं. मतलब इनको अगर ओवरऑल सपोर्ट कर रहे हैं हमारी थीसिस को तो अच्छी बात है. बट मेरे काउंट्स और मेरे सेटअप्स में तो मुझे फिलहाल अभी लग रहा है कि यूएस जब तक 35,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक यूएस में भी तेजी मुझे तो नहीं करनी है. 35,000 डाउ बंद करेगा उसके ऊपर, देन आई विल थिंक कि हाँ कुछ एक सी वेव ऊपर का पुल बैक में या 3 वेव जो भी चालू हो रहा है. 3 और सी विल स्टार्ट वंस यू ब्रेक पास्ट 34,900 35,000. सो लेट्स कीप इट द राउंड नंबर फॉर डाउ. 35,000 के ऊपर डाउ फ्यूचर्स बंद होगा तो या स्पॉट बंद होगा फिर सोचेंगे. बट फिलहाल इन द ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि भाई इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म यू आर स्ट्रेस्ड ऑन द अपसाइड इन यूएस ऑल्सो. एंड इंडिया तो खैर है ही, इंडिया तो अभी गिरा ही नहीं है. सो वहां तो कोई डिबेट ही नहीं है. So, Sarvinder sir, by this clearing, and then Rohit sir, same question to you as well. By this clearing, as per your you guys wave counts that you guys do, so as per this clearing, do you feel that 17,250 will be a sacrosanct level? Yeah, matlab you feel that matlab dono you both of anyone of you can just answer this. But I want to know because I have been on the downside. I've been very clear that the levels that I have for like next Thursday की बात कर रहा हूँ मैं, कल की बात नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट थर्सडे तक की बात कर रहा हूँ. तो वहां पे क्योंकि क्या होगा, वहां पे हमारी मंथली कैंडल, वीकली कैंडल सब बनेगी, तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट एज वेल. कल भी इंपॉर्टेंट होगा. इनगल्फ हो गई तो आज के लो के नीचे अगर हो गया तो कल भी इंपॉर्टेंट ही है. ऑफ कोर्स थर्सडे जो कैंडल होती है. तो इसमें समथिंग दैट यू गाइस वांट टू ऐड दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर द लिसनर्स आल्सो, फॉर मी आल्सो ऑफ कोर्स. देखो दोस्त, क्लियरिंग टू क्लियरिंग बोलना तो बड़ा इट्स अ डिफिकल्ट टास्क एंड अ डिफिकल्ट गेम, क्योंकि एक्सपायरी इन इंडिया इज टोटली लास्ट 1 or 2 days कैन समटाइम्स बी वेरी वेरी कंट्रोल्ड in terms of what stocks move and what they want to do, what Nifty does. बट मैं तो ब्रॉडली यही सोच के चलूंगा अभी फिलहाल मेरे अकाउंट्स के हिसाब से कि जब तक 18,000 के ऊपर नहीं है, जब तक 18,000 के ऊपर निफ्टी नहीं है, तब तक तो मुझे लगता है कि नीचे में 16,800 टूट जाएगा. दैट्स माय ब्रॉड रीडिंग कि अगर ऐसा नहीं होता है तो तब तक नीचे में 16,800 टूटना है. एज लॉन्ग एज यू आर नॉट गोइंग अबव 18,000 नीचे में आपका ये
16 लो टूटना है. So let's see. I think it's a ये developing फिर story, उसके as बाद I said. 1800-250 वाला लेवल है ना, वो वाला जहाँ से फॉल हुआ स्टार्ट हुआ था 1400 पॉइंट का, फिर वो वाला आ हाँ, सो जाएगा. हर बार हम पिछले लेवल्स पे जाते रहेंगे तो फिर नीचे के लोअर लोस हाँ कैसे बनेंगे. यू हैव टू गो इनटू अ सीक्वेंस ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स, राइट? इफ यू आर लुकिंग इन for a bear market or a correction, and vice versa if you are looking it for a bull market. So right now on the weeklies I am getting a clear on the weeklies I am getting a very daily weeklies I am getting a very clear lower top lower bottom formation, especially on the dailies you can see that. So वो है, पिछला वाला हमने हाई निकाला है, बट आई एम टेलिंग दैट मैथमेटिक्स टू एवरीवन कि ये जो गुड फ्राइडे वाला जो बुलिश गैप आ गया, ये स्मार्ट मनी ने विदाउट एनी एफर्ट अगर आपको निफ्टी को 300 पॉइंट खींचना है तो कम से कम आपको 2-2 हजार करोड़ का माल 3 दिन में, अगर आपको 300 पॉइंट खींचना है तो आप एटलीस्ट 1500-2000 करोड़ की डिलीवरी लेके जाते हो. तो अराउंड $1 बिलियन के करीब और $250 बिलियन मैंने बचा लिए, क्योंकि मैंने मंडे को सडनली 300 पॉइंट ऊपर खोल के खाली 15 मिनट टिका दिया. बाकी तो पूरा गांव आ गया ना सौदे भरने के लिए. द मोमेंट यू ओपन समवेयर, नीचे के 20 ट्रेड तो अपने आप निफ्टी के लग जाते हैं. पीपल